Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. It's so cold Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. And hello everyone, it's good to be back. I do not see anyone really. Hold on. Oh wait, so this should not be here. Okay. Yes. All right. This is what I am doing right now. Streaming from home. So just a moment. I'll set up the mic again. Take this off. That's for dust and covering dust. And there's a little earphone attached here, which I generally use for my Xbox. I'll open up the chat on my phone just a little bit. Hold on. Have I not subscribed to my own channel?
Hold on. I hope people got the notification. I'll just put up some story as well. There you go. Chat's up. I see 4 likes. That's nice. Hold on. Alright, people, smile for Instagram, I think. Okay, hold on. Right, people, you can smile for Instagram. It doesn't look good from this end, but oh my god, the mess of cables behind it's it looks horrendous at one point. But I'll really have to blur the cables. I think it's that bad right now. Hold on, just a moment. Yeah, by the way, I'm wearing this Hashnote t-shirt. I'm taking these chargers out. It looks bad. Now, all right, I can finally take a photo of my desk. It looks horrible with the cables, man. I'll be honest. I have a couple of Hashnote stickers around. All right, so now I can finally take a picture of that classy setup that I have. Alright, sounds good. Now this is going to go on Instagram and Twitter, maybe? I do not know if people actually followed up on that notification. Hold on. It's a mess right now, to be honest, the setup, but I think it does the job for me. That's to be honest. I'll open up live chat. Actually, hold on a minute. I'll need a third device to, because my phone is almost dead, so I'll have to put this up on my iPad. Yeah. Ooh-wee. I had 2 viewers momentarily and I don't have the third one yet. So I think I missed the initial starting time where, when people were actually waiting. I saw 4 people waiting when I looked up the dashboard of stream, but unfortunately can I open this in Safari? Why doesn't it open up on the YouTube app instead? Okay, regardless, I think it's fine. I can at least read chat. Just a moment. I can just keep it up here. So I can sit straight and pop out chat. Alright, sounds good. So, hello everyone. Welcome to the stream. So this is officially my first live stream as a developer. I've done this a lot as a gamer and as a I don't know, man. As a gamer, I did this a lot. If you check out one of my old YouTube channels, or perhaps the only old alive YouTube channel right now, which I do not use right now, it's gonna take a while. Actually, might as well literally search that. So this is where I used to stream games as a hobby, pretty much. And it has 350 subscribers, yay. And yeah, man, after I got an Xbox, I streamed for maybe a couple of months, maybe, and I just could not get time to do anything in that regard afterwards. The last live stream that I did, if I'm not it was 6 months back, so it's been a while since I've actually streamed anything, and this is entirely new to me, to be honest. What I'm doing right now, coding live streams and live streams where you actually develop stuff. I'll just pull this up here and might as well put out a tweet, maybe, just in case people join in after that. I can see 4 concurrent viewers. No one's chatting though. What's going on? Anyway, this is how it goes generally. I don't know if someone's looking at the playback. This is how it goes when you start streaming.
you end up talking to yourself for a good month and a half. I started streaming in 2019 May. I think it was 4th of May 2019, my first live stream. And for a good month or so, when I was playing PUBG PC, I was just talking to myself on stream. There was no one there, no one chatting. So it's tough that way. But again, I think you learn how to handle that. So I'm not very new to streaming. That's why it's not really a problem for me. Except I do not know where the share button is. Hold on, boys. How do I share this on Twitter? Hey, Sri. Hey, I think it's Sushmita from Twitter. Hello. Welcome to the stream. I'm just dropping the share link again on Twitter just to I don't know if you guys did you get a notification by any chance? I'm not sure if they're going up because this is a new channel, so the YouTube kind of messes that up, the notifications part. Okay, it does not copy the link, man. I'm behaving like an amateur here right now. Hold on. So just a moment. And wait, and boom, I got the link finally. So yeah, dev streams fairly new to this and not new to streaming, but streaming as a developer. Aryan is there. Array Dragon kaisa? All right, so might as well yell on Twitter. So if as and when people see it, they can join in. All right, so here's what I'm gonna do. Yes, Sudhar is here. Hello. Welcome to the stream. So here's what I'm gonna do. I have I don't know if you guys can see this. So this is the mock-up that I have. I'll just enlarge this a bit. So this is something similar to what I'm trying to build right now. If you look closely, you have a header where it's simple. There's a logo and a couple of nav items on the bar at the top. There's a kind of a hero section where you talk about the core things of the community. Then there's a feature section. It's not exactly what I'm planning to build, but somewhere similar, somewhere down the line. Just I don't know, a layout, because that's something that I'm not good at. I'm not good at wireframing and planning out the design and stuff. I'm good at development. I'm good at CSS maybe, but not really good at mockups and other things like that. Wireframing, Figma. I created a Figma account yesterday just in an idea to maybe try out things. I was not able to create a single thing there because my brain does not work that way. I cannot imagine what UI should look like. I'm not aware of the principles and everything like that. So I had to look at something like Dribble. You should refer to this website as well. There's a website called dribble.com. Dribble with 3 V's for some reason. Lack of creativity, pretty much. That's what got me into engineering. Lack of creativity. If you're creative, I do not know what you're doing in engineering. But yeah, creative design in general. That's why I refer to websites like Dribble. They have all of these mockups and cool stuff that you can look at and say, okay, let's build this. And that's something that I can do. I can look at mockups and design and say, okay, this is what I'm going to build. So yeah, man. So this is what I'm planning to build, and we're going to start basically from scratch. So let's get back to the editor. I created a folder there. So it's called One Byte Social Website Collective, where I have all the assets and testimonials. Just a summary of what testimonials are. I sent out a Google form on Discord, Twitter, and Instagram on my Instagram story, where I asked you people to fill in if I have personally interacted with you or I've mentored you in any way. So I get responses from people who have interacted with me, and this is just to let people know and have a good idea that okay, this is I'm a guy who you can look up to and you can join my community. Couple of things that I had in mind, that I was going to ask feedback about One Byte Social as a community, but not a lot of people have actually joined in on our weekly Sunday chit chats. So they haven't really experienced that much. So because I in a way represent the community, I thought let's put out a form where people can talk about me and get feedback from me, because that's something that I've did in my college as well, right? I've talked to a lot of my juniors. I interacted with them. I've kind of mentored them to make their decisions as to which skills they should learn next, what should they do now. A lot of people have their placement season coming, so I've talked to them as to how they can prepare for placements, prepare for specific companies. So that's something that I've done, and I think I've interacted with them enough that they can share feedback about me. And this is all authentic feedback. If you want, I have a Google response sheet as well,
that basically shows what they've sent me. I've picked 6 out of them I had at least I think 10 or 11 responses. I picked 6 that can go to the website. I've like modified the grammar a little bit, but yeah, I'm using those responses as the testimonials for our community, because in a way I represent the community, right? So that's why. That's what is there in the testimonials.js file. Wait, I'll amateur streamer mistake. I forgot to switch screens. Yeah, this is what we are looking at. The wireframe. I don't know if you guys can see this now. Finally, yep. Amateur streamer mistake. I forgot to switch screens. This is what we are looking at. So this is the mockup that I have. It says connected carers, something like that. This is from Dribble, and I'm trying to build something similar. So there's a hero page at the front. There's a nav bar. This is not the exact same thing that we're going to build, but something similar. There's going to be a logo here and a couple of buttons on the right, not at the center. And this does not show you the mobile design, but I want to like make it mobile friendly as well. And yeah, just a few things. Of course, we do not have partners, so that's not going to be there. There's no find your community section because hey, we just have one. So we have this where we talk about the different features of the community, and we have a mission that's going to be there, and lastly a join button at the front to like join our Discord. That's the general UI that I'm thinking of, that we can in a way develop maybe in a couple of hours and see how like what the progress is. And then let's start with a simple layout and see what we can do, and then going forward we can keep adding to it. This website is going to be purely open source. I'll put this up on our GitHub, and yeah, I think uske baad people can contribute to it and go with whatever they want to build. So again, just a narrow, like just a high level understanding of the UI that we're going to build, and after that we can make our modifications just to like make it unique to our community and our website, things like that. So let's start. I have a testimonials.js file here, and I have an assets file here where people sent me their responses. I have their profile picture images as well that we can use in our website, of course. And yeah, let's get started. So I'm going to create a Next.js project. So it's going to be npx create next app. By the way, people who are watching, we are going to be building this website in Next.js and Tailwind CSS. Okay, the camera is off for some reason. Yeah, I'm not too sure where I can keep my camera. Should I keep it here or should I keep it at the bottom right? I think this is ideal. Like, I'm not sure. Alright, so we're going to be using Tailwind. We're going to be using Next.js and Tailwind CSS. It's fairly static, so there's no backend involved, but it's going to be purely front end. So at least at the beginning, right now, at the stage of the community we are, उसका क्या करेगा? I'm not too sure, man. I think replace ही हो जाएगा वो तो. उस पर ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं था. I think तूने सिर्फ एक nav bar ऐड किया था. Sorry, but again यार, उस पर ज़्यादा लोगों ने काम किया भी नहीं. And I think that wasn't the ideal way to approach it as well. जितने लोग हमारे पास थे, I cannot expect people to contribute to something from scratch. तो मुझे थोड़ा build करना पड़ेगा खुद से. I have to like show them कि अच्छा ऐसा है project already. Now it's in a stage where people can actually join in and add small features. हाँ सर, आपने ही काम किया था. Aryan was the only guy who did very little, like the basic amount of work. The setup was there. He added a few things in the UI, but again, so I think it's unfair to just be it's unfair on my side to like throw you that project and say चलो भाई इस पे काम करो. So I thought, no, maybe I'll do some decent amount of work and then say, okay, if you want to add more features, feel free to do that. And Aryan, I think तू maintainer भी है ना उस repository का, तू भी admin है, तो you can actually approve and decline pull requests. So feel free to do that in the later series. And yeah, let's get started. I think so. Create next app. This app is going to be called One Byte Social Website. And yeah, that's it. So we just wait for a bit. Would you like to proceed with TypeScript? No, because like in couple of hours, I don't want to deal with TypeScript errors for like 35-40 minutes. So I'd rather go with JavaScript for this one. Use ESLint, sure. Use the src directory, yes, because it is similar to React. Wait, I'll reduce the quality on the. Achha. For a moment, it was buffering for me, so I thought, would you like to use the experimental? No. Yeah. So add /star. So this is basically the. I'll show you this. ये क्या है इसका मतलब बताता हूँ मैं.
This is basically import aliases. So when you import from a folder like components, you can just use @/components instead of copying the entire directory path like src/component, like front end /src/components, stuff like that. You can actually go with just one line where you can say @/components/ whatever the name of the component is. And similarly for other folders as well. ये एक file बनती है इसका. I'll show you what that file looks like. Hold on. I can see 5 people, 6 concurrent viewers, but only Aryan is chatting. Guys, बात कर सकते हो थोड़ा. How about chat a little? Give me some engagement. कल से मेरी जॉब चालू हुई है एंड आई स्टार्टेड विद Next.js TypeScript. रिस्पेक्ट पड़ी. सो Next.js मेरा जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है ना, इट्स बिल्ट ऑन Next.js एंड TypeScript. हेलो हिमांशु, वेलकम टू द स्ट्रीम बॉय. कैसा है भाई? ऑलराइट, सो न्यू वर्जन इज अवेलेबल है, चलता है आई थिंक. सो वी कैन cd into one byte social website. And wait, we have another important thing to do. So must buy. Awesome. Alright, so we have an assets folder here. What I'm going to do is I'm going to copy the assets folder. If everything inside the assets folder, wait, instead of that I can actually like replace the folder. So you can create a new directory. Again, you might see other people do this on folders. I do this on command line /public. So Next.js में कैसा होता है, you can store images and assets and everything inside a public folder. So इसलिए मैं यहाँ पे एक नया folder बना रहा हूँ assets का. I'll create a new folder. Then I'm going to copy things in my existing assets directory into one byte social के अंदर public, उसके अंदर assets. So that's how it goes. Wait a minute. अच्छा, वैसे it omits testimonials का file as well. Okay. So what do we have here? Can go one byte social website and I can use code to open up VS Code on that folder. क्या हुआ भाई, मैसेज डिलीट क्यों कर दिया? Alright, so I hope you guys can see this. एक नंबर. Let's not go full screen because मेरे को switch करने के लिए easy पड़ेगा. So I have the favicon and everything that's come in. I'm going to replace the favicon existing one. How different is Next.js from React? I haven't tried Next. So a lot of things are different. So I'll talk about things that are similar first. Okay, एक बार मैं setup कर लेता हूँ पूरा. उसके बाद I'll come to the differences. I'll move the favicon का icon into public. उसके बाद what I'm going to do is assets के अंदर images तो आ गए, but there's an entire folder that's missing. So I'm just going to grab that. First of all, I'll create a new folder called data. Then I'm going to create. Actually, you don't have to create anything. No. Look. Wait. How has the testimonials file not come in? Why is this a JPEG file? Hold on. In that case, it's a JPEG file. Okay, hold on. So what I'm trying to do right now here is that I'm going to get my assets, as in I've got the images. Now I'll get the data file जिसमें I have all the testimonials and उन्होंने जो like सामने से मुझे जो responses and feedback मिल रहा है उसका data है. So I'll just grab that from the testimonials.js. And this goes into the data folder. There you go, that's there. And you can read the feedback. It's actually really lovely. जितने भी लोगों ने भेजा ना मुझे feedback, I'm really humbled by all the people. I'll start with Daulat, Sarvatnya, Diya, Siddharth, Sarvesh, Sneha, people like Yash Sarang and other people also responded, Shivani as well. So अगर आप लोग देख रहे हो, thank you so much. I had to like मेरे को 6 pick करने थे because I can only do grids of 3 by 3 on the website, so I had to pick 6.
out of the 10 or 11 that I received. Okay, so I think I have got everything else. No, I have the testimonials folder पूरा मेरे को copy करना पड़ेगा. There it is. अच्छा, so I'll come to Yash का question. How is Next different from React? So React में कैसा होता है? Okay, file structure Next ने थोड़ा same कर दिया. You have an SRC folder, उसके अंदर you have your components and everything. However, Next.js में कैसा होता है? There is file-based routing instead of your classic routes that you write. Router बना के. I'm not sure what React 18 uses. पहले router कुछ हम लोग router लिखते थे, switch use करते थे हम लोग पहले. अभी React 18 में क्या होता है मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है. So instead of that, what you can just do is you can create routes in pages. ये pages जो folder है उसके अंदर. I'm not sure if you guys can see this as clearly, but जो pages folder है उसके अंदर ही आप लोग अपने routes create कर सकते हो. Like index.js है, ये जाएगा आपके like standard slash वाले directory पे. But if I want to create if I want to create a route for slash let's just say about, तो I can just create about.js. उसके अंदर ही about का पूरा सारा ये आ जाएगा. About page, so you don't have to like specifically write code to create that route. About.js लिख दिया मतलब वो about वाला route भी create हो जाता है अपने आप. So that's one good thing about Next.js that you will clearly like see. जैसे जैसे काम करना चालू करोगे सबसे पहले यही नोटिस करोगे. दूसरा, it primarily focuses on server side rendering. तो in general मतलब जितना observe किया है, I think it's better for the performance of an application. And in general like काफ़ी टाइम से जब से Vercel ने काम चालू किया इस चीज़ पे, it's very popular. That's why Vercel is a really rich company right now, by the way. जब start किए थे उतने नहीं थे. They were still in the name in the industry but not as rich as they are right now. And इसका खुद का API भी है, so you can write an API. जैसे यहाँ पे देखो एक simple सा API है. So if you like make a request to API/hello, then आपको ये response मिलता है. We don't have to use the API for this project because again पूरा static है. And again there's a lot of good stuff to like take a look at. underscore document है इसका, like they have some script. I'm not sure, इसका मैंने उतना देखा नहीं है, but again there's a lot of cool stuff to explore. And ऐसा है कि मैं Next.js में around 2 साल से काम कर रहा हूँ and still I haven't got like the hang of everything inside the framework. So ऐसा है. And I mean it's a lovely framework. जितना मैंने काम किया I think it's one of the best web frameworks out here. Coupled with Tailwind and other things that I use, I think it's a very good framework. If you look at my GitHub repository, the last 5 to 6 projects that I've worked with, they have been with 5 to 6 big projects, full stack projects. They have been with Next.js and Tailwind in the front end. Back end में कुछ ना कुछ change होता रहता है, but front end में I've stuck to Next.js and Tailwind. And yeah, that's about it. In case of similarities, it's that you write React components. Similarity यही है कि आप components जो लिखते हो, like if you look at index.js, this is what a React components look like है ना. like देखोगे तो यही React का component भी ऐसे रहता है. You write a function, this is a React functional component by the way. So उसके अंदर function लिखो, then you write your own code, then you return a React component, right? तो वैसा ही है. तो it's pretty much the same stuff. अच्छा, so let's talk about things that I'm going to use in this project. Next.js Tailwind तो हो गया. उसके अलावा let me separate this. I'll start some music maybe. I'm not sure ये तुम लोगों को कितना अच्छे से सुनाई दे रहा है, but let me see. I think it's fine, है ना? It's good. Okay, so aside from the music, I'm going to be using Tailwind CSS का documentation. It's a very well written documentation there. तो ये मैं यूज़ करने वाला हूँ. I'm going to be using their उनका colors के लिए मेरे को ये reference चाहिए रहता है कि कौन सा color क्या है, because they have a different naming convention for it. And of course my good old friend ChatGPT. इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आज, ठीक है. We're going to use this a lot. So, and what I'm also going to be using is an old project of mine. If we can go to portfolio website, I think that's where this is what I do because I follow the same framework. What I generally do is I refer to a lot of stuff from my old projects. So कुछ components होते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे को चाहिए होती है. I just refer to my old projects and वही से चीज़ें उठा लेता हूँ, so that I do not have to like क्या बोलते हैं, rewrite same kind of code every time. So this is what my old project looks like and इसी चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा रेफर करने वाला हूँ.
If you haven't seen my website, it's srikeshaiyer.live. You can check it out, or I'll just show it to you here. Again, built on Next.js and Tailwind CSS. I do the same. Nice. So this is built on Next.js and Tailwind as well. Also static, but it's very well. Like मैंने UI पे काफी काम किया था, so I feel really good. इसका end result जो आया बहुत अच्छा है. It's responsive, like एकदम phones के लिए भी. I've like run this on iPhone 6 and उसपे भी अच्छा दिखता है, तो win-win. अच्छे से बना हुआ है. This is something that took a lot of time actually. ये जो दो images है, एक ही image है, मतलब image और side में description है, उसको मुझे phones के लिए like I had to like blur the background and मेरे को ये चीज़ front में लाना था, तो took a little bit of extra CSS. I mean not really inside of CSS. Tailwind पे ही थोड़ा सर फोड़ना पड़ा कि like how do you do this in Tailwind? So that's the thing. बाकी I think it's a very well made website. Some of the things that took a lot of time, one of them is this. Again a fairly simple feature, but उसको मेरे requirement के सब like उसको align करने में वो सारी चीज़ों में थोड़ा time गया. And this was simple. This is not, and ये positioning भी है, social media icons का positioning bottom left में took a little bit of time. And yeah man, it's a fairly simple UI. Even then the important thing is that it looks good. And it's responsive and it feels smooth. I think that's the most important thing. That's why I really like the end result by the time I finished with it. Apart from that, yeah, like the links look nice when you like hover on them. It's like line slide करके जा रहा है. Look, so overall the look and feel is pretty decent. That's why I'm going to refer to this project as a whole. Like when I need something separate that I've previously built, तो मैं उस चीज़ को reuse करने के लिए I might refer to this project. Okay, so that's what we're gonna do. And now let's create our first component. It's going to be a layout component. We are not going to like build UI yet. So I'm going to create a new folder called components. And create a file called layout.jsx, or you can actually create JS as well, it's not a problem. And I use this extension called React ES7 React Native snippets, which can easily like create components for you, like the boilerplate for components. So if I just do RFC, I hope you guys use this as well. Previously it used to be underscore RFC for without the import React, but right now because it's a convention, people import React in every file. So RFC, wait a minute, okay, why is it not triggering it yet? Hold on. If I do RFC, yeah, there you go, press enter, it's the entire component here. Hello Sanchit, welcome to the stream. Hello. Hope you guys enjoy this. Actually, it's the first time I'm actually like coding on stream. Stream पे game बहुत खेल चुका हूँ मैं, but to actually code and explain code, I think it's going to be a little challenging उस हिसाब से. But I hope you guys enjoy this. And इस stream में तुम लोग वापस आके देख सकते हो कि मैं कैसे front end build करता हूँ, कैसे मैं step by step चीज़ों को process करता हूँ एक के बाद एक, and then come to an end result ऐसे. And the most important thing I think you can learn from this is कि मैं error आने के बाद मैं respond कैसे करता हूँ, how I react to errors, because errors मुझे भी आने वाले हैं. I'm going to face a lot of errors. There are a lot of things that are going to break. मैं अभी से बता के रखता हूँ. I'm going to break a lot of things, but it's about how I come back and how I fix those things. So yeah, I think you should look forward to that. All right, so what I'm going to do first now is import a head component from next/head. This is for the head tag. If you look closely in the index.js file, I'm just basically gonna copy this and मैं चीज़ यहाँ डालने वाला हूँ. I'll first create a React fragment. So title is going to be, so I'm going to create some props. Props पता नहीं कैसे काम करते हैं. So you basically pass data to the component. So I'm going to take title and children. I think that's pretty neat. उसके बाद instead of create next tab, I'm going to use the title directly जो prop से आया. Oh, it's a tile. It's title, not tile. And apart from that,
Also, yeah, so because Next.js server side rendered, it's also good for SEO, which is something that we're gonna do. I'm gonna create a new folder where I handle SEO. So inside src it's going to be helpers. I'm going to create a file called seo.js. Again, something that I did for my last project, so I'm going to just do that all over again. मेरे पास जो डेटा है मैं उसको एज इट इज यूज करने वाला हूँ. So this is what I did for my website. I'm going to change this a little bit. One Byte social, one Byte social is a community, is a tech community for people to come together, collaborate and enhance their skills to make a quality career in the tech industry. Something that I briefly just came up with, so इसको बाद में change कर ही सकते हैं. Keywords में, so these are things that you do for SEO, right? Like keywords डालो, so basically you just want to rank as high as possible in the search index basically. So like search करो, One Byte social search करो तो हमारा website जितना हो सके उतना ऊपर आना चाहिए. Because it's a fairly common name, like मैंने जितना अभी search किया One Byte social के नाम से और भी चीज़ें हैं, and it's going to be hard to get this website on top. तो थोड़ा time जाएगा उसमें, but I'll try my best. Let's see. Keywords में I can add One Byte social, One Byte. I'll add the One Byte show as well because podcast. One Byte show and tech community. The One Byte social tech community. Tech, probably community. Again, a lot of keywords that you can think come to. I'll replace this for now. OG image is basically, I'm sorry. Yeah, OG image basically होता क्या है? आप लोग जब भी, how do I demonstrate this? Like if I, so होता ना जब भी आप ट्विटर पे या कहीं पे आप अपना वेबसाइट या किसी कोई भी लिंक शेयर करते हो, वो अपने आप एक एम्बेड होके एक इमेज आता है ना, तो दैट इमेज इज द ओजी इमेज. तो व्हेन यू लाइक पुट इट ऑन सोशल मीडिया, आप कहीं किसी को लिंक भेजोगे ना, तो with the link, the image that comes with it, that is the OG image. So whenever I share my hashnode articles on Discord, उसके साथ में आपको एक इमेज दिख जाएगा, that is the OG image for that article. वैसे ही our website is going to have an OG image जो हम बाद में edit करेंगे, because फिलहाल मेरे पास OG image है नहीं. I think that's something that I have to like create on Canva or something. Author is going to be Srikesh, I think that's fine. And OG title is going to be, yeah, OG title is basically जो उस लिंक पे जो टाइटल लिख के आता है, that title is OG title. And this OG title is going to be One Byte social or One Byte social community. Sounds good. So that's my SEO.js file made. I'm going to just import, just a moment. Yes, so I'm going to import, हमने क्या क्या बनाया, keywords, content keywords, OG title, author, content keywords, OG title and author from helper slash. So this is what I can do. I do not have to like dot slash. No, इसके लिए I can just do @/ एंड मैं @/ करूँगा तो मेरे को एक src फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें दिख जाती हैं. तो इसके अंदर डेटा, हेल्पर, सारे फोल्डर्स मेरे को दिख जाएंगे. आई एम गोना से हेल्पर्स फोल्डर के अंदर SEO फाइल के अंदर. सो दैट्स देयर. आई मिस्ड ऑल इंपोर्ट्स. या सारे आ रहे हैं ना. आई होप आई डिड नॉट स्पेल एनीथिंग रॉन्ग. सारी चीज़ एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ मैं, तो इट्स फाइन. सो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, कंटेंट विल बी जस्ट कंटेंट जो मैंने इंपोर्ट किया. सेम यहाँ पे ये तो सेम रहेगा. ये चीज़ मेरे को वापस करना पड़ेगा 2-3 और चीज़ों के लिए. सो मेटा नेम डिस्क्रिप्शन विल बी, नेम चेंज हो जाएगा यहाँ पे. प्रॉपर्टी विल बी
OG title, and that is OG_title. वापस properties OG description, which will be OG description में मैं क्या रख सकता हूँ? I think मैंने वापस content ही डाला होगा, so I'll put content again, and I'll put this again. It's not property, it's property. Oh my god, मैं क्या कर रहा हूँ? This is the dumb things that I do, and जो तुमको stream पे live दिख रही है. This is why I think अगर तुमको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहा हूँ, it's not that. I screw up a lot of things. तो अभी जब रन करेंगे तो पता चलेगा कितने एरर्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी अपने को. And this is going to be OG title हो गया, OG description हो गया ना. तो keywords. See, the music is slapping for me. Keywords, and author. Whoops. Why did it open PowerShell? OG नहीं, just author. Author will be author. And ये property नहीं है, name है ये. So OG title हो गया. And link rel icon will be favicon.ico, जो मैंने अभी just copy किया था. तो फिफ्थ लाइन पे लेआउट फाइल में फिफ्थ लाइन पे चिल्ड्रन. अरे राइट, यप, चिल्ड्रन. या एक सेकेंड. Right, sorry about that. फिफ्थ लाइन पे चिल्ड्रन वो फिक्स हो गया. उस पर आता है, आई थिंक. वो मैं लिखने रहता तो शायद तभी मेरे को समझ में आता. एंड से हेड के नीचे I'm going to create a new div. उसके अंदर एक और div, या उसके अंदर ही चिल्ड्रन बना दूंगा मैं. Because I tried main and I tried body, दोनों में कभी कभी Next.js error देता है, hydration का error रहता है. So this is our layout file ready. What I'm going to do now, I'm going to just remove all of this. भाई आराम से. Component साफ हो गया. I'm going to just import. I don't even want style, so import layout. So you can see now कि मैंने layout जो मैं import किए डायरेक्टली लाइक कंपोनेंट से इंपोर्ट हो गए. डोंट यूज दिस फॉन्ट चेंज कर देंगे बाद में. एंड जस्ट गोना से लेआउट लाइक दिस, बट देयर यू गो. टाइटल इज वन बाइट सोशल कम्युनिटी एंड चिल्ड्रन तो यही है उसके नीचे ही. एंड let's just say h1 hello, or let's say welcome to one byte social. if I run this तभी कुछ मजा आएगा. यहाँ पे नहीं, मैं पीछे वाले टर्मिनल पे रन करता हूँ. उससे VS कोड थोड़ा स्लो हो जाता है एंड मेरे पास रैम का थोड़ा कमती है, स्पेशली क्योंकि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो CPU थोड़ा परेशान है. वेबसाइट पे हूँ ना. So I can just do npm run dev. सही है ना. या सो इफ आई रीलोड दिस, मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट को लाइक डेव पे रन करके देख रहा था कि सब सही चल रहा है क्या. आई डिड अ टेस्ट लाइव स्ट्रीम एट अबाउट 5:30 को. मैंने जस्ट 4:30 को मैंने जस्ट चेक किया था कि सब ठीक चल रहा है क्या. देयर यू गो, इंटर इज नॉट डिफाइंड. ना कुछ तो हो जाते रहता है बिकॉज मैं शायद कुछ पेस्ट करना है. ये मैंने निकाल दिया, लेकिन ये हटाना भूल गया मैं. And it should work fine now. Yep. Welcome to one byte social. We have what we want. इसको यहाँ पे डाल देंगे अभी. Let's install Tailwind. तो उसके लिए पहले सर्वर बंद करते हैं. You don't have to, but करते हैं. Let's see.
we'll go back to the documentation and command copy करेंगे. I've done this a lot, but फिर भी मैं हमेशा documentation के पास ही जाता हूँ. Some dev dependency install कर रहा हूँ मैं Tailwind, Post CSS and Auto Prefixer. Post CSS से basically build करने वाला हूँ मैं CSS अपना. And when I actually don't need a Git repository right now, क्योंकि मैं बाद में खुद का क्रिएट कर दूंगा. टाइपस्क्रिप्ट नहीं भाई, 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम है. अगर यहाँ पे टाइप के एरर आने लगे मेरे को 2 घंटा अलग से बैठ के डीबग करते बैठना पड़ेगा. सो आई थॉट आई विल प्ले सेफ. ऑलरेडी थोड़ी बेइज्जती होने वाली मेरे को ऐसा लग रहा है. वेलकम टू द स्ट्रीम बाय द वे सर्वेश. ऑलरेडी थोड़ी बेइज्जती होने वाली मेरी, तो आई विल सेव माई सेल्फ अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा. मैंने गिट रेपोजिटरी उड़ा दी ना, ठीक है. I've installed dev dependency. Now I'll basically activate or initialize Tailwind init, and I think -p is for post CSS. So yeah, it'll create 2 files. It'll create post CSS config and Tailwind config. We'll tap into both of them. Post CSS में कुछ करने का जरूरत नहीं है. I think हमें Tailwind config change करना पड़ेगा. So this is going to be ये documentation में पड़ा हुआ है, तुम लोग देख सकते हो आराम से. So this is what I'm going to do. अभी based on whatever you're doing, तुम लोग अपना तुम्हारा configuration change होगा. I'm using the SRC structure, so I'm just going to copy this and put that inside content. Done. That's pretty much it. I'll also add some other screen sizes maybe later, but for now I think I'm good. I'll refer to my old website and see मैंने screen sizes क्या रखे थे. अभी जितना मैं ज़्यादा कोड करते आया हूँ इन द लास्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स, मैंने खुद से बहुत कम कोड किया है, स्पेशली द फ्रंट एंड पार्ट. देखो ये सारी चीज़ें, इतना मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा स्क्रीन ऐड की थी, एंड आई एडेड दिस क्यूबिक बेजियर. आई डोंट नो, लाइक इट्स अ ट्रांजिशन काइंड ऑफ थिंग. आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस इज. आई थिंक ये वो फॉर द इमेजेस में भी मैंने ट्रांजिशन डाला होगा. आई थिंक उसके लिए ये क्यूबिक बेजियर ऐड किया था मैंने. मेरे को याद भी नहीं एग्जैक्टली व्हाट दिस इज फॉर. What? सडनली यूट्यूब कैसे खुल गया भाई? जादू. एक सेकेंड, मैं दूसरे डिवाइस में चैट देख रहा था एंड सडनली लाइक इट वाज ऑन सफारी. VS कोड में कर्सर का टाइप क्या यूज किया? ये जो पल्सिंग एनिमेशन दिख रहा है इसकी बात कर रहा है क्या? आई थिंक नो. कंट्रोल कॉमा फॉर सेटिंग्स. प्लीज शॉर्टकट्स यूज करो तुम लोग. इट्स वेरी, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. कर्सर एनिमेशन, आई थिंक इट्स कॉल्ड पल्स. आई एम नॉट श्योर. ब्लिंकिंग, एक्सपैंड, यप ये वाला. ब्लिंक नहीं, एक्सपैंड. कर्सर, इट्स एन ऑप्शन कॉल्ड कर्सर ब्लिंकिंग एंड यू कैन चूज एक्सपैंड. बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी है. सो दिस इज लाइक वेरी स्मूथ, लुक्स गुड टू द आई. सो या, and that's my config file edited. Now if I restart the server, I think I should have Tailwind styles applied. नहीं भाई, खत्म नहीं हुआ मेरा काम अभी तक. I have to like add this to globals file as well. So home.module मैं उड़ा दूंगा, बस उसकी ज़रूरत नहीं है. globals के अंदर I can remove all of this and I'm going to copy paste this part. अब ये जो एरर दिखा रहा है इसका सोल्यूशन मेरे पास है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट नॉट हियर, एकदम बाहर वाले डायरेक्टरी में यू कैन क्रिएट अ .vs कोड. अगेन समथिंग दैट आई डू फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई प्रोजेक्ट्स. इसके अंदर यू कैन डू settings.json. उसमें दिस इज देयर इन माय Next.js टेम्पलेट एज वेल. इफ आई कैन शो यू, बस मुझे पूरा खुद को भी याद नहीं है. So create a .vs code directory. उसके अंदर settings.json में पहले एक और फाइल बनाना पड़ेगा called css custom data, because Tailwind में एरर दे रहा. तो you don't have to do this but it looks good. वो एरर वहाँ पे देख के अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसलिए I was just curious कि ये एरर हटेगा कैसा. So you can check this out. ये देखो,
व्हाट आई एम डूइंग इज css custom data डॉट जेसन करके एक फाइल बनाया डॉट वीएस कोड के अंदर. उसमें आई कैन ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. लाइक ये टेलविंड वाला जो ऐड टेलविंड वाला जो कॉल है वो करता क्या है. देन इफ़ यू ऐड रिस्पॉन्सिव एंड ये सारी चीज़ें टैग करोगे ना तो वो रेफरेंसेस भेज सकता है एंड वो खुद तुमको डॉक्यूमेंटेशन बना के देगा उस चीज़ का. तो यहाँ पे तुम लिख के दिखा सकते हो. सो व्हेन समवन हवर्स ऑन दैट टेलविंड पार्ट वहाँ पे वो एरर नहीं दिखाएगा. सो आई जस्ट कॉपी दिस एंड अप्लाई इट इन माइन. मैं बोला ना इट्स वेरी लिटिल कोड दैट आई एम गोइंग टू राइट बाय माई सेल्फ. मैं मेजॉरिटी चीज़ें पुराने पहले जो चीज़ें लिखी हुई है मैं उन्हीं से उठाता हूँ. या जो पुराने प्रोजेक्ट में नहीं होगा वो काम मेरा चैट जीपीटी करेगा. इट्स फनी बट या प्रीटी एक्यूरेट. I don't need TypeScript वाला part because I'm not using TypeScript. So now if I go back to globals.css, देखो error हट जाएगा. Using the tailwind directive to insert tailwind's base components and utility styles and screen styles into your CSS. Okay, so वो error हट गया. And what next? I can start working on my index.js file. I can close layouts for now. If I do an npm run dev, I think I should have the styles changed a little bit. Load नहीं हुआ क्या? It's yet to build, I think. ये probably stream की वजह से थोड़ा सा slow हो गया. Got it, thanks, nice man. Do we have 10 subscribers? 5 लोग सब्सक्राइब भी कर दिया क्या? 11 सब्सक्राइबर हो गए. ओहो. अब देखो. सो बैकग्राउंड वाइट हो गया एंड यू कैन चेक दिस फॉन्ट चेंज हो गया ना थोड़ा. दैट बेसिकली मीन्स कि टेलविंड अप्लाई हो गया. सो वी आर गुड टू गो नाउ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज अब मैं मॉकअप दिखा देता हूँ तुम लोग को मैं क्या बिल्ड करने वाला हूँ. सो इसको फुल स्क्रीन मत करो. सो इफ आई जस्ट शो यू ब्रीफली व्हाट आई एम प्लानिंग टू बिल्ड. सबसे पहले ये बिल्ड करते हैं हम लोग. दिस इज काइंड ऑफ हीरो सेक्शन. नैव बार है उसके नीचे. यू हैव बेसिकली हीरो पेज जहाँ पे तुम एक मेजर फोटो डाल सकते हो एंड उसके नीचे उसके साइड में तुम लोग लिख दोगे कि क्या क्या कम्युनिटी के फीचर्स क्या क्या है. सो लेट्स बिल्ड दैट फर्स्ट. सो CSS में विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक इफ यू आर वेरी न्यू टू CSS दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू लुक एट अ पेज तुमको विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है कि हाउ दैट बॉक्स इज गोइंग टू लुक. एवरीथिंग शुड बी अ सेट ऑफ बॉक्सेस फॉर यू. एंड जब भी तुम when you can look at UI like a set of boxes तुमको तभी like you can say कि अच्छा मेरा भी visualization या UI का interpretation अच्छा हो गया. So let's create this big box first. ये पूरा जो एक बड़ा box है ना पहले वो बनाते हैं. That has some amount of margin, some amount of padding. यहाँ पे margin तो नहीं है, padding ही है basically. So let's create that box first. So अभी तुम लोग देखोगे because I'm using tailwind सारे margin padding सब हट गया. So this ये पूरा चिपका हुआ है एक end से. So let's create that box first. I'm going to create like पहले एक काम करता हूँ मैं. I'll create a div that says class bg black which will add a black background to it. Width screen, height screen. इससे क्या होगा कि मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ मैं जो पूरा स्क्रीन का width और height लेगा. I'm going to say h1 hello and इसका text size कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे को. So default white है. So text वाइट. सो इससे टेक्स्ट दिखने लगेगा तुमको. अभी तुम लोग देख सकते हो कि वेयर दैट टेक्स्ट इज नाउ रिलेटिव टू द बैकग्राउंड. सो ऑलराइट. सो आई एम गोइंग टू गो टू लेआउट्स फाइल. उसमें ना मैं यहाँ पे क्लास ऐड करता हूँ. थोड़ा CSS ऐड करता हूँ. आई एम गोइंग टू से मार्जिन टू द लेफ्ट. एक्चुअली वेट. सो आई कैन से what can I do here for a large screen? I can limit the max width of 6xl. Flex container, items center, justify center. ठीक है. अभी मैं div को इसके अंदर एक और div बनाता हूँ. So the outer one becomes a flex box. The inner one becomes a flex so this one becomes a flex container and inside वाला becomes a flex item. So क्लास नेम की ज़रूरत नहीं है बट ज़रूरत पड़ेगी बाद में. ओके. सो नाउ वी नो कि मैक्स विड्थ क्या है. वेट इसको
मैक्स विड्थ हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं. ओके, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, शायद मेरे को थोड़ा डिफरेंस समझ मिलेगा. तो यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड को if I add a margin to this, margin on the y axis 5 का margin डाला, margin on the x axis मैं 4 का margin डाला, you can see the difference now. अभी तुमको दिखेगा कि वो अंदर आने लगा है. ठीक है, so margin नहीं डालते because again बाहर कुछ भी नहीं है, so I will add padding instead, ताकि जो टेक्स्ट है वो अंदर आने लगेगा या जो और कंटेंट है वो अंदर आएगा. बिकॉज ये तो बॉडी है ना, इसके बाहर तो कुछ भी नहीं रहने वाला है. सो वी डोंट नीड अ मार्जिन रियली, वी नीड पैडिंग. सो अभी इफ आई लुक एट द मॉकअप, उन्होंने लाइक एक्स एक्सेस पे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन दिया है, बट दैट्स नॉट रियली मार्जिन, दैट्स ऑल्सो बिकॉज वो लोग ने जो विड्थ है उसको लिमिट किया हुआ है. सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना ऐड स्टैंडर्ड मार्जिन और पैडिंग ऑफ 4, दैट इज आई थिंक 1 pixel, I'm not sure, 1 rem, sorry, 16 pixels. So I can add maybe 32 pixels का padding, so that's P8. and अभी तुम देखोगे कि वो जो white वाला पार्ट था वो हट गया, इंस्टेड टेक्स्ट अंदर आ गया. so that's our point, right? हम लोग अंदर कंटेंट को अंदर फिट करने वाले हैं, हमको मार्जिन नहीं चाहिए, हमको सेपरेट नहीं करना है उस चीज़ को, बिकॉज ये तो सबसे आउटर कंपोनेंट है ना, उसमें मार्जिन डाल के क्या करोगे. ठीक है, तो BG has to be now. Here's an interesting thing. Our logo, if you look at it, it's not plain black. It's not pitch black. कहाँ गया? Public के अंदर, assets के अंदर, you have logo.jpg. So this is not plain black. This is kind of a gray shade. इस पे थोड़े black के incense है, but it's not plain black. So I'm thinking मैं क्या कर सकता हूँ? Let's look at colors maybe tailwind का. इंस्टॉल तो कर दिया मैंने, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मे बी स्टोन 8, मे बी ये कौन सा कलर है? ओके, लेट्स ट्राई दिस. इट गिव्स अ स्लेट कलर. नहीं यार, इससे थोड़ा सा और डार्क चाहिए. 900. Okay, can I write these, right? So can I write BG zinc 900? मैंने ये कभी मैंने लिखा नहीं है, तो मेरे को पता नहीं. I only use black या stone. So BG और grey. So BG zinc 900, is that valid? Yeah. Okay, pretty much. So let's try that. Yeah, this looks much better. Okay, so ये हो गया मेरा background. अभी मेरे को ना height fix करना है मेरे को इसका, which I think I can probably do here. I'm not sure how, because this is 8. ये तो सिर्फ padding है. If I take full width, if I write, it's taking full width, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि I'm already restricting. This makes sense. So if I expand this, ये देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग. ये देख रहे हो, आफ्टर 6XL इट्स नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग. समझ रहे हो? सो दैट्स द रीजन. सो आई थिंक इट वाज वर्किंग फाइन. मैं बस कोड को समझ नहीं रहा था. आई लेट दिस स्टे एंड सो मैक्स विड्थ ऑफ 6XL हो गया. व्हाट आई एम गोना डू नाउ, हाइट ज़रूरत नहीं है, ये दोनों चीज़ों का ज़रूरत तो नहीं है as much as it is here. Now my interesting thing is, इसका मैं color change कैसे करूँ? I do not want. Makes sense. So now I'm going to just put this here. So it covers it. So now I know कि मेरा div जो है वो इतना ही हिस्सा ले रहा है. If I'm on a really wide screen, because मेरा ये जो मैं देख रहा हूँ अभी एक 24 इंच के मॉनिटर पे देख रहा हूँ, so it's really wide. मतलब in comparison to other screens, like the normal screen, like iPad वाले even smaller laptops से compare करोगे, it's wide. So मैं बोल रहा हूँ कि 6XL तक, as in 6XL से compare करोगे मतलब it is roughly 1152 pixels इसके हिसाब से.
If compare with that, so when the width is 1152 से ज़्यादा, at that point in time it's going to restrict. उसका max उतना ही रहने वाला है, उससे बड़ा नहीं होएगा वो. So that's what we have fixed. क्योंकि तो in a way we are like centering our point. Like हमारी चीज़ें हम उसको like the biggest question in the Twitter community is how to center a div. This is one way to center your div. This is one way to like center everything that you have. अभी जो भी आएगा इसी लाइन में आएगा. If I'll show you it. So if I keep adding h1s and मैं margin डाल दूँ 10 का. Okay. If I keep adding h1s, it's gonna come in that straight line. It's properly centered and I didn't have to do much. It's like 2 line का code लिखा मैंने. So I didn't have to do much and it also looks responsive क्योंकि of course अभी तक हमने कुछ ज़्यादा ऐड किया नहीं है to like destroy that, but I'm telling you, like without doing too much of work it looks good. And Tailwind CSS by default is mobile friendly, is mobile first in terms of design, so that's also good. ठीक है, so hold on for a minute. Are people chatting or I'm not able to see anything? Because I can see 8 people. मेरे को statistics में 8 लोग दिख रहे हैं, but I cannot see anyone chatting. Is it like जो bug वगैरह है पता नहीं. The last message I can see is Sarvesh saying got it, thanks. उसके आगे तो मैसेज आया नहीं है ना. कभी कभी ये भी हुआ है भाई मेरे साथ कि आई एम स्ट्रीमिंग लाइक आधे 1 घंटे से मैं बके जा रहा हूँ कुछ ना कुछ एंड पता चला आई मिस्ड लाइक 20-30 चैट्स. इसलिए मेरे को लाइक रीचेक करने के लिए फ़ोन खुल के देखना पड़ता है कि लाइक सब सही है ना. हम है. अच्छा, हेलो विशाल, हेलो. अरे बता दिया करो यार, चैट पे हो तुम लोग. ओके, सो अगेन मैं Next.js करने वाला था, मैं तुमको UI सिखाने लगा यहाँ पे. इट्स गुड टू डील विद दीज थिंग्स. सो अभी हमें पता है कि हमने इसको सेंटर कर दिया. अभी हमें पता है कि हमें इसके ऊपर ही काम करना है. हेलो विशाल, हेलो. अच्छा, तो SEO वाला निकाल देता हूँ मैं. अभी हमने सब सेंटर कर लिया है. पैडिंग थोड़ा और कम कर देता हूँ मैं. अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन है, उसका पंगा है. ओके, हाँ, उसके हिसाब से 32 पिक्सल्स का ठीक था. या दैट्स फाइन. सो अभी अब क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट अ nav bar. ये जो दिख रहा है हमें यहाँ पे, बाय जूम इन अ लिटिल, थोड़ा ट्रैक पैड से करना पड़ रहा है मेरे को. या सो if I zoom in a little, this is what it looks like. So मैं ये नहीं डालने वाला हूँ. I'm not a fan of having centered nav bar on a big screen. मैं जनरली क्या करता हूँ, I have two items. One is logo left में and I don't know how like related to this. This is your left, right? कैमरा में कैसा दिखता है? Okay, this is your left. यहाँ पे logo आएगा. Then on the right hand corner you're gonna have your links and actions जो भी है. So I'm just gonna have this link. This logo and the name of the platform, that is One Byte Social. I'm going to have my links here on the right. समझा? तो that's what I'm going to do now. तो पहले ये build कर लेते हैं. Again, not a very hard task. So I'm going to create a new component in components folder. I'm going to create a header.jsx and just create a React function component जो return करेगा हेडर उसके अंदर. सो लेट्स लुक एट द लेआउट अगेन. वापस हम लोग जाते हैं. हमने देखा कि हमने विड्थ को फिक्स कर दिया है. पैडिंग, सम अमाउंट ऑफ पैडिंग हमने ऐड कर दिया उस पर. एंड अभी इसके अंदर क्या करना है, हम लोग को हेडर बनाना है ना. तो हेडर को कुछ सेपरेट मार्जिन का ज़रूरत तो नहीं है. एक्स एक्सिस पे हम वाई एक्सिस पे थोड़ा मार्जिन डालते हैं. सो आई एम गोना से MY4 ताकि हेडर एंड नीचे के कंपोनेंट्स में थोड़ा डिफरेंस आए. जस्ट फंक्शन लाइक क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल डिफरेंस. क्योंकि हम लोग जब नीचे वाला कंपोनेंट बनाएंगे उसको हम अच्छा खासा मार्जिन दे भी देंगे तो वो डिफरेंस उतना नोटिसेबल नहीं होगा. बट थियोरेटिकली स्पीकिंग एक डिफरेंस दे देते हैं उनको. सो we'll add a margin on the y-axis. Okay, not first line. Margin on the y-axis of 4 in Tailwind units. It's basically 1 rem. Rem is a CSS unit. CSS के units देख लो. And that 1 rem is equivalent to 16 pixels. So margin on the y-axis, मतलब margin top and margin bottom हमने दिया 16 पिक्सल्स का. उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, और nav is going to be a flex container. So we're going to add flex
फ्लेक्स रो का बनेगा, कॉलम नहीं है. सो फ्लेक्स रो बाय डिफॉल्ट रो ही होता है. वी कैन से अलाइन आइटम्स सेंटर. वेट, या सॉरी, इट्स गोइंग टू बी आइटम्स सेंटर. टेलविंड की क्लासेस पे कंफ्यूज हो गया मैं. आइटम्स सेंटर एंड इट्स गोइंग टू बी जस्टिफाई सेंटर. जस्टिफाई सेंटर इज लाइक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये करने के लिए, सेंटर करने के लिए, एंड आइटम सेंटर इज वर्टिकल एक्सिस पे. सॉरी, जस्टिफाई वर्टिकल एक्सिस सेंटर करने के लिए है, अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सेंटर करने के लिए. सो बेसिकली एकदम बीच में लाने के लिए लोग करते हैं नहीं. तो अभी क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल जगह पे हम लोग जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे. तो जस्टिफाई बिटवीन हो जाएगा वो, बिकॉज इफ यू लुक एट द लेआउट, हम लोग दो एंड पे कर रहे हैं. ये दिस इज गोइंग टू बी एट लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, ये होने वाला राइट हैंड साइड कॉर्नर में. सो जस्टिफाई हो जाएगा स्पेस बिटवीन. एंड आई थिंक उसके अलावा हमको और क्लासेस की तो ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड सेम रहने वाला है. ओके, देन विल इम्पोर्ट इमेज फ्रॉम Next.js. Next.js का खुद का इमेज है, तो इमेज फ्रॉम next/image. दिस बेसिकली सपोर्ट्स लेजी लोडिंग एंड ऑल ऑफ कूल स्टफ. So it's going to be src, just like normal HTML image tag. src होता है slash assets, उसके अंदर logo dot jpg. alt डालना होता है. alt basically like screen readers के लिए क्या what that image exactly describes. For that you write an alt tag, not a tag, an attribute to the image tag. उसके अंदर I can write one byte social logo. I'm going to specify the width and height because it's going to be 100. Height is going to be 100. And on the other side, इसको भी हम div के अंदर डालते हैं just in case. इसको भी हम flex बना देंगे क्योंकि logo के साथ साथ हमको title भी चाहिए, right? So we're going to create a flex container here as well. Flex item center. यहाँ पे justify center हो जाएगा, लेकिन it's not justify, it's justify. Justify center हो जाएगा यहाँ पे. And image के आगे I'm gonna put an h1 and say 1 byte social. इसका formatting बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए भी just add content. And that's going to be one div. फिर दूसरे div के अंदर हम लोग links डालेंगे. What can we add? Contact का link है. What can we add? और क्या डाल सकते हैं हम लोग? Let's add a contact link. ये भी flex हो जाएगा by the way. Flex item center. Whoops. Spelling. अरे auto complete नहीं हुआ. Justify center. It's going to be h1. About us. It's going to be on the same page. तो उतना content रहने नहीं वाला. So it's going to be contact. Again, one page website है by the way. Page पे website पूरा एक ही page पे आने वाला है. So contact होने वाला है. Then it's going to be blog. अभी फ्लेक्स के अंदर ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल आइटम्स है ना फ्लेक्स के अंदर, उनमें गैप कितना रहने वाला है बाय यूजिंग द गैप प्रॉपर्टी. सो ये टेलविंड का CSS का प्रॉपर्टी नहीं है, टेलविंड के अंदर वो और CSS लगाता है. तो इसके लिए द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लेक्स गैप, बट टेलविंड के अंदर हम जस्ट गैप स्पेसिफाई करते हैं. सो इट्स गोना बी गैप ऑफ 4 मे बी. सो गैप इज बेसिकली डिफरेंस द स्पेस बिटवीन इंडिविजुअल फ्लेक्स. I think they're called flex items. So flex containers के अंदर flex items होते हैं, right? So individual flex items के बीच में difference जो होता है वो हम gap से specify करते हैं. So 16 pixels का हमने gap दिया है ये दो contact और block के बीच में. And we have 1 byte social logo हो गया. यहाँ पे भी हम gap डालते थे थोड़ा. A gap of maybe 4. Gap of 2 is fine. 8 pixel का gap. So let's import this in our layout. क्योंकि इंडेक्स पे तो वो जाने नहीं वाला, इंडेक्स पे तो सेम ही यूज़ करना है ना हमको, तो या फिर इंडेक्स में इंपोर्ट करते हैं. लेट्स डू दैट. लेट्स सिंप्लीफाई सम थिंग्स फॉर अस. सो इफ आई कैन इंपोर्ट हेडर हियर, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम component/header.
I'm just gonna put a header here. Let's see. It's loading, and there you go. So a huge logo. मोबाइल के लिए अभी थोड़ा गंदा दिखता है, बट विल चेंज दैट. विल ऑल्सो हैव टू लाइक डिफॉल्ट टेक्स्ट को हमको वाइट करना पड़ेगा, है ना. तो लेट्स जस्ट यहाँ पे ही डाल देता हूँ मैं. टेक्स्ट को हमें वाइट रखना है. दैट्स गोट चेंज. अभी मैं फुल स्क्रीन करता हूँ एंड आई विल शो यू व्हाट दिस लुक्स लाइक. सो वी हैव एन इमेज, वी हैव द लाइक द नेम ऑफ द कम्युनिटी, वी हैव कॉन्टैक्ट एंड वी हैव ब्लॉग. ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है ना, दैट इज स्पेसिफाइड बाय द गैप प्रॉपर्टी. अभी मैं इसको थोड़ा सा और जस्ट इनफ दैट आई कैन शो केस टू यू. एंड अभी मैं अगर इसको गैप को अगर मैं 8 कर दूं तो और बाहर चला जाएगा. समझ रहा है. सो कीप इट एट 4. तो देखो ये थोड़ा राइट में और आ गया. सो वी हैव दैट. अभी इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मे बी 80 आई थिंक 8 इफ नॉट 100. 80 पिक्सल्स का हमने इमेज बना दिया. और क्या कर सकते हैं. मे बी राउंडेड फुल, तो इमेज गोल हो जाएगा. That did not help, I think. Instead of that, can I try an image tag instead of the next image? अगर मैं normal image यूज करूँ तो I think उससे शायद कुछ चेंज हो जाए. नहीं, इंटरेस्टिंग. इमेज को मेरे को राउंडेड कॉर्नर्स देने थे, तो मे बी इमेज के क्लास नेम में अगर मैं चेंज कर तो शायद हो सकता है. बॉर्डर रेडियस चेंज करना है ना मुझे, तो सो डिव क्लास नेम विड्थ ऑफ 80 पिक्सल्स, हाइट ऑफ 80 पिक्सल्स, राउंडेड फुल. तो मेरे को पूरा सर्कल मिलना चाहिए आइडियली. लेट्स सी हाउ दिस गोस. Look at the browser again. इसको white background दे दूँ. Instead of this image, if I just write say age, if I don't put anything, I think I should get a circle. Yep, ये circle तो मिल गया मेरे को. बस image को उसके अंदर डालना है. अगर मैं इमेज के क्लास नेम में सेम चीज डाल दूँ तो लेट्स सी. यप, सो इमेज के क्लास में डालने से हो गया वो काम. इमेज हो गया राउंड अपना. दैट वाज माय फर्स्ट टास्क. तो अभी आई डोंट थिंक आई नीड दिस डिव राइट नाउ. डज इट रिटेन दैट? हाँ. सो इफ आई गो बैक टू Next.js का इमेज, डज दैट रिटेन दैट? आई हैव टू सी. तो मुझे बस इमेज को Next.js के इमेज से रिप्लेस करना है. And it does, so that's pretty much perfect. इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं. Let's do maybe 60 and 60. Could we use class name in image? हाँ सरवत ने वही किया मैंने. Eventually I had to do that. Class name image में ही डाल के मैंने rounded full कर दिया and it did the job for me. जी तुम लोग को मेरे से ज़्यादा भी आता है. मेरे को ये सब प्रॉपरली करके इतना टाइम हो गया है that you guys know more than me at this point. बॉर्डर में भी बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है. बॉर्डर हम लोग कहीं और यूज़ करने वाला है बाय द वे. जब हम टेस्टिमोनियल्स के कॉन्टैक्ट्स डालेंगे तभी वी विल यूज़ बॉर्डर. उनके नाम, उनका जो फोटो रहेगा उसको सर्कल करने के लिए वी विल यूज़ अ ब्लूइश पर्पल बॉर्डर, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो अपना लोगो आ गया. मैं टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ. द टेक्स्ट इज गोइंग टू बी हेडर कंपोनेंट के अंदर ना. द टेक्स्ट इज गोइंग टू बी बोल्ड 2XL. बोल्ड नहीं हो, इट्स गोइंग टू बी फॉन्ट बोल्ड.
और फॉन्ट सेमी बोल्ड एंड अपर केस, तो सारा अपर, अगेन आई डोंट हैव टू स्पैम इट लाइक लिटरली, CSS से भी वो चीज़ हम कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं. So this is what it looks like. Font I can, it's debatable man, font मैं change कर सकता हूँ बाद में, मेरे को ये उतना कुछ खास लगा नहीं. I'll change the font later. Contact and blog के लिए I think we are fine on that front. और क्या कर सकते हैं? Contact and blog are links, right? So उसको पहले हम link बना देते हैं. So header के अंदर we'll import the link tag from Next.js. Actually we don't have to, we can just use ahref on both the ends. This is going to go to contact का मेरे पास अभी link है नहीं कुछ, तो I think you can directly mail me, maybe that's the only contact that I have. So if you want to write an email, like mail का अगर link डालना है, you can just write mail to : and let's just say this is my email address, so you can mail me here directly like that. That's what contact is going to right now. अभी मेरे पास contact का कोई और खास कुछ है नहीं. I want to ask you how Next is different from React. Good question. Again ये चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले आंसर किया था. So Next.js में क्या होता है, there's a lot of fundamental differences. Next, for example, Next is not different from React. Next is an implementation of React. React is a library. Next.js is a framework. So React को use करते हुए Next ने एक framework बनाया है where they make use of other features like server side rendering हो गया, फाइल बेस्ड राउटिंग हो गया. सो रिएक्ट में राउटिंग करने के लिए हम लोग राउट्स का फाइल बनाते हैं. राउट के अंदर हम लोग लिखते हैं कि दिस राउट गोज टू दिस कंपोनेंट, ऐसा. सो वी डू नॉट हैव टू डू दैट हियर. मैंने यहाँ पे कोई राउट का फाइल बनाया नहीं है, कोई राउट का कोड लिखा नहीं है मैंने. मैं एक index.js फाइल को एडिट कर रहा हूँ एंड मेरा अपने आप वो इंडेक्स वाला राउट बन गया. इंडेक्स एज इन एकदम स्लैश वाला राउट. अगर मेरे को अबाउट का राउट बनाने का रहेगा, इफ आई वांट टू जस्ट गो फॉर localhost 3000/about, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ पेजेस फोल्डर के अंदर एक about.js करके फाइल बनाना है. एंड मैंने जैसे यहाँ पे कंपोनेंट लिखा है वैसे ही मेरे को अबाउट के अंदर लिखना है. दैट्स इट. दैट इज फाइल बेस्ड राउटिंग फॉर यू. इसको और भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं. मेरे को अगर अबाउट के फोल्डर बना के भी मैं उसके अंदर index.js डाल सकता हूँ, सेम अबाउट वाला राउट बन जाएगा. एंड इफ आई वांट, मैं अबाउट के अंदर और नेस्टेड राउट डाल सकता हूँ, उसके अंदर मैं और लाइक about/hello अगर ऐसा कुछ डालना है मेरे को, वो भी कर सकता हूँ. सो राउटिंग के मामले में आई थिंक इट्स फार बेटर देन रिएक्ट. प्लेन रिएक्ट से तो काफ़ी बेहतर है. एंड सर्वर साइड रेंडरिंग है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो. सर्वर साइड रेंडरिंग एक्जैक्टली होता क्या है. तो बेसिकली तुम्हारा जो सर्वर है, इट टेक्स केयर ऑफ क्या बोलते हैं, बिल्डिंग द ऐप लाइक टू शो इट ऑन योर ब्राउजर. क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है, तुम्हारा ब्राउजर जो है कंपाइल कर रन करता है बेसिकली इस चीज़ को कंपाइल करके. तो it is said theoretically that server side rendering is better for search engine optimization and stuff like that, which is why I think it is preferred very like काफ़ी आजकल के जो नए applications बन रहे हैं, they are made in Next.js and it is arguably the best web framework right now. So it is very good and इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा अगर तुम लोग React सीख रहे हो तो React सीखने के बाद Next.js ऐसा कोई framework भी सीखना. सिर्फ Next ही नहीं, Next जैसे और भी frameworks है like Remix हो गया, Gatsby हो गया. So these are all server side rendering वाले frameworks and they are all good. सो सारे सीख सकते हो तुम लोग. ऑलराइट, सो मेल टू करने से हमें मेल आ जाएगा. एंड ब्लॉग के लिए यू कैन चेक आउट दिस ब्लॉग. अभी मैंने से ये जस्ट क्रिएट किया मैंने, इसमें कोई ब्लॉग नहीं है. इसमें मैं आता हूँ, मैं डिस्कॉर्ड पे एक अनाउंसमेंट डालता हूँ इस चीज़ के लिए क्या करना है इसके. इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट दिस ब्लॉग, इफ़ यू वांट टू लाइक लर्न हाउ टू लाइक इफ़ यू वांट टू लर्न कंटेंट राइटिंग, तुम लोग एक्चुअली ये ब्लॉग पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो. ये मैं अभी बता देता हूँ. एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं डिस्कॉर्ड पे भी डाल दूँगा. सो इट्स blog dot नहीं, it's what was it called, one byte social I think .hashnode.dev. So like I've created a blog and if you see this on the browser, let's see क्या होता है. I think we have a blog. It's just that हाँ, तो blog है हमारे पास ready, but it's just that हमने कुछ डाला नहीं अभी तक इसमें. But you can feel free to write whatever or whenever you want. And we can actually remove the uppercase, man. It looks like we are actually like screaming. This looks decent. Although इसको change करने की ज़रूरत तो है, but अभी के लिए ठीक है. So contact बन गया, blog बन गया. And what else can we do? We can make links look a little bit better, maybe. यहाँ पे कैसे डाला नहीं, यहाँ पे भी उन्होंने प्लेन ही रखा है. सेकेंडरी बटन उन्होंने ऐसे ही रखा है.
मे बी हम लोग यहाँ पे ऐसा राउंडेड बॉर्डर, ये राउंडेड बॉर्डर डाल सकते हैं ऐसा, समथिंग लाइक दैट मे बी. Let's see. So I do class name rounded MD, rounded SMB, ठीक है. Small rounded corners, border red नहीं, border blue 100, I don't know, border साइज के लिए क्या होता था, बॉर्डर स्पेसिंग नहीं, I think I can specify the size directly, 2 pixel, 1 pixel. Yeah, border width 1 pixel, perfect. Rounded SMB हो गया. So ऐसा एक बॉर्डर मिल गया मेरे को. अभी मेरे को बस इसमें पैडिंग डालना पड़ेगा, है ना. So that's going to be P of 2 maybe. P of 2 will be a little small, but P of 4 should do the job. So let's do P of 4 and थोड़ा और bluish कलर दे देते हैं. Okay, so horizontal, like vertical border थोड़ा ज़्यादा हो गया ना. So instead of I'm going to do PX4 and PY3. Let the border stay and इसको rounded MD कर देता हूँ मैं, थोड़ा और rounded दिखना चाहिए वो. Yeah. And hover करने पे I can say BG gray 100. नहीं 100 नहीं रे, 900 करना होगा. Like it has to be dark but just वो difference दिखना चाहिए. 700 maybe. Yeah, this is decent. ये better लग रहा है ना. So let's apply that to this log वाला thing instead of contact को हम वैसे रहने देते हैं ताकि like दोनों में difference दिखना चाहिए ना. So let's stick to this one. तो ब्लॉग को ये मिल गया, कॉन्टैक्ट को वैसे का वैसा रहने दिया हमने. एक्चुअली PY कैन बी 2 मैन, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो. एंड PX कैन बी 3 मे बी. या आई थिंक दिस लुक्स डिसेंट, है ना. हे शांतनु, वेलकम टू द स्ट्रीम. हेलो. तो हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं 1 Byte सोशल का एंड दिस इज़ वेयर वी आर. थोड़ा एक स्ट्रक्चर बना दिया, लेआउट अच्छा है. अभी बस UI थोड़ा और इम्प्रूव करना है. सो ब्लॉग का लिंक मैंने डाल दिया है. कॉन्टैक्ट के लिए लाइक जस्ट अ मेल, अभी मेल टू ही है, कुछ कॉन्टैक्ट का मैंने स्पेसिफिक बनाया नहीं है. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट टाइप फॉर्म जहाँ पे लोग जाके फीडबैक वगैरह डाल सकते हैं या मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो उसके लिए आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए है बहुत कुछ. अभी के लिए वी आर डन विद द नाइफ बार. दिस इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू. हम लोग ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं. ये ऐसा समथिंग लाइक दैट. ये बीच में मैंने यहाँ पे ये डाला नहीं क्योंकि डजंट लुक दैट नाइस. अच्छा, सो हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. आई एम गोइंग टू लाइक कीप इट एस PX4, इट्स फाइन. हाँ, वाइट चलता है. हाँ, सो व्हाट आई वाज गोना से इज हम लोग अभी क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं ना वैसे वैसे उसको रिस्पॉन्सिव भी बनाते हैं. बिकॉज राइट नाउ इफ आई डू दिस ऑन मोबाइल स्क्रीन पे तो इट्स गोइंग टू लुक बैड. तो व्हाट आई एम गोना डू इंस्टेड, इसको ये जो फ्लेक्स कॉलम, ये जो फ्लेक्स रो है ना, इसको फ्लेक्स कॉलम बना देंगे. एंड आई एम गोना से इफ इट्स नॉट अ स्मॉल डिवाइस इट्स गोना बी फ्लेक्स रो अगेन. तो अभी देखो, इट लुक्स मच बेटर नाउ, राइट. एंड आई एम गोना से गैप ऑफ 5 एंड इफ इट्स स्मॉल देन गैप ऑफ 0. सॉरी, इफ इट्स नॉट अ स्मॉल डिवाइस देन इट्स अ गैप ऑफ 0, अदरवाइज इट्स अ गैप ऑफ 5. तो ये दोनों में गैप भी दिख जाएगा क्लियरली एंड इट लुक्स मच बेटर नाउ, है ना. तो आई थिंक इट्स अ गुड डिफरेंशिएटर टू हैव. सो अभी ये इधर ही यही रिस्पॉन्सिव भी बन गया ना. सो अभी तुम लोग देख सकते हो कि लाइक इफ़ यू राइट गुड CSS, लाइक अगर तुम लोग अच्छे से लाइक स्ट्रक्चर करते हो अपने UI को, तो उसको रिस्पॉन्सिव करना भी बहुत ईजी हो जाता है. मैं कितना हार्डली मैंने किया 2 लाइन लिखा रहेगा ना, तो एंड इट स्टिल लुक्स सो मच बेटर पहले से. इट्स लेस क्लटर्ड. लोगो है उसके नीचे, लाइक यू हैव योर बटन्स,
दैट्स इट. वैसे भी ज़्यादा nav हमारे पास थे नहीं, तो इट्स there's no point in having too much clutter there वहाँ पे. अभी उसके बाद what we can do is okay, so let's look at the mockup again. What do we have? So एक image है and यहाँ पे we have description, right? So let's try to do something similar. मैं क्या करने वाला हूँ ना, पता है क्या, इन्होंने फ़ोन का कुछ डिज़ाइन डाला नहीं है. मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फ़ोन में इमेज हटा दूंगा, बिकॉज अगेन टू मच कंटेंट मे बी, क्योंकि एक बेसिक हेडर के लिए आई थिंक, बेसिक फ्रंट लेआउट के लिए आई थिंक टेक्स्ट काफ़ी होगा फ़ोन पे. अगर पीसी पे होगा तो ये बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इमेज डाल देंगे. व्हाट आई एम गोना डू इज इसको एक्सपांड करते हैं, कम बैक एंड आई एम गोना से इंडेक्स के अंदर. अभी हेडर एडिट हो गया तो हेडर का अभी काम नहीं है, अभी हम लोग इंडेक्स पे आ जाते हैं. लेट्स क्रिएट अ डिव. अच्छा, लेट्स कम बैक टू विजुअलाइजेशन. अभी हम लोग देखते हैं कि ये विजुअलाइज कैसे करना है इस चीज़ को. निशित हैक्स, हेलो, आई थिंक यू आर निशित बरिया फ्रॉम डिस्कॉर्ड, in which case hello, welcome to the stream. So yeah, just somewhere through developing our website I've created a nav bar. Again, it's not the best right now, but I think by the time we like keep developing the website, I think it'll like जैसे जैसे डिज़ाइन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे will improve the styles as well. ये font पे कुछ चेंज करना है, we'll look at it later. बाकी I think it's pretty much the same. blog के लिए एक लिंक है, contact के लिए just a mail to form right now, but I'll add a different form there later. So now let's look at this part where this is the UI mockup that I'm following. So here what I'm going to do is I'm going to keep this way for PCs and bigger screens, but I'm going to like remove this image for smaller screens. So let's look at that. So there are 3 types of text here, and there's a button on the left, and then I can start contributing. I'm also learning Tailwind 10.js. Oh, that's nice. You can also start contributing. Definitely, always welcome. So so this looks like a flex container to me, left and right, straight and simple. So I'm going to say class name. Let's add decent amount of margin. Then my4 should be fine. Then we're going to say it's a flex container. It's a flex row naturally, and items center, justify center, and width full है ना, inherited. Okay, so if I add another div here, I have to add 2 more. Wait, hold on. So if I look at the mockup, it's in the center, na? So it's good. Have you created this with React.js? No, we are using Next.js and Tailwind CSS. This framework is called Next. It's an implementation of React, but it's an enhanced version of React.js, you could say. So that's what you're using. Again, it's just that it takes care of routing and a lot of other things that you have to actually like implement with React. So this is a framework that I've been using for quite some time. I've been using Next.js for more than a year now. I started using Next.js in like September 2021. So almost a year and a half. Year and a half. So that's how long it has been. And yeah, it's been good, man. I think it's one of the best web frameworks out there. So I really love using Next.js that way. Alright, so in the first div we're gonna have some text. So I'm just gonna drop a couple of lorems. Just 1, 2, 3. This one was a bigger one, so I'll just keep it that way. Also, I have to not forget that text is white, which I'll add here. It's fine. Wait. Text is white, so yeah. So this now, right now, it's taking full screen, है ना? So when we create another div, thanks for that's a good reminder. I'll add a gap of 4 just in case. Gap of 6, 5 is fine. And here I'm going to add a Next.js image. So I'm going to import image from next/image. So Next.js has their own image tag, like that is optimized for image optimizations and lazy loading and things like that.
cover thing, but it's just like solitary tag. So src just like a normal HTML image. You can. So right now I'm going to use one of my images. Which one of these is it? I think this is the image that I'm going to use. Yeah, this is the image from this is a screenshot from our first meeting, so that's what I'm going to use. /assets/002.jpg, is it? img002.png, sorry. So height is going to be, I think, 300. Width is going to be 400. And alt, let's add, so it's like right, social hero image. Let's see what that looks like. There you go. So the image is there, except it's not taking as much. If I look at it like from a normal screen's perspective, it's responsive that way, but 500 by 800, how does that look? That's better. I'm gonna add a class name as well. So I'm gonna say rounded MD, so it looks rounded as well. And maybe add a little bit of border blue 200, border 2 pixels. That looks better, I think. And if it's on an even bigger screen, it looks like this. Yeah, so this looks decent. I'll increase the margin so it like separates them well. And by 20. So this looks decent, है ना? So you have 3 kinds of text. इसका width set कर देते तो क्या होगा ना कि when we like, so I don't want it to like text यहाँ तक आना नहीं चाहिए. Text हम लोग restrict कर देते हैं 500 पिक्सल पे. So maybe what we can do here is max width. LG क्या होता है? LG is 512. हाँ, LG should be fine. That does not help. Oh, okay. So justify can be between, I think. Does that help? No. Okay, that does not help, right? क्योंकि इमेज बड़ा हो जाता है लेकिन does not solve my problem. Which way you used to learn dev, using tutorials or documents? A bit of both, actually. I'll show you which Udemy course I followed. I made one mistake. Okay, I'll tell you. So Next.js, if you search, you will get a lot of good things. Again, I'm not going to call it a mistake. That's on me. I purchased this course from Maximilian, and I follow this YouTube channel as well. It's quite a good YouTube channel. What I felt in my experience was that it was very slow, and that probably was not for me because I knew a little bit about React and I was comfortable a little bit with JS. Again, I was not very good at JS, but I was comfortable with it. So again, this guy covers almost everything. What is file-based routing, and he goes all the way. Like, if you this is what you should probably look at when you. That's something that I learned. React कभी भी कोर्स खरीदने से पहले look into the contents कि क्या-क्या है उसके अंदर. So यहाँ पे मैंने देखा ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखा नहीं है. मैंने देखा कि ओके इस YouTube चैनल, इसका YouTube चैनल है जो मैंने देखा है, Maximilian Schwarzmiller, guys from Sweden, I think, I'm not sure. So इसका YouTube चैनल मैंने देखा हुआ था. And I thought, okay, nice. इसका Udemy course भी है. Let's buy it. Let's see how it goes. I watched it for a bit. इसका React refresher है. पूरा React तुमको बताता है कि React में क्या कैसे होता है. He creates a project first in React. वो Next.js से पहले तुमको पहले बोलेगा कि React पे project बनाता है. Which is good, but again, it was very very slow for me. Like 4 घंटा he just takes it out on React. So again, it wasn't very great for me. मैं at one point मैं बोर हो गया. What I did instead, I went back to my web development god, Brad Travers.
I don't know if he's out here. There you go. So I followed this course called Next.js Dev Tool Deployment. The best. I do not know if there's a better Next.js course out there, man. I'm sorry. I'm a little biased towards Brad, but this guy just makes learning easy. Like, you look at this. कोई भी तुमको 5 घंटे वाला तुमको दिखेगा नहीं. And ऐसा नहीं है कि उसके बड़े वीडियोस नहीं होते. He takes his time when he thinks he should take time. मैं तुमको अपना Udemy ही दिखा देता हूँ, तो शायद थोड़ा और बेहतर आइडिया रहेगा. You'll also get to know मैंने कहाँ पे पैसे उड़ाए. So again I'm going to expose my learning like course. मेरे अभी के current courses कितने तुमको दिखने वाला है वो. Login with my account. मेरा थोड़ा expose होने वाला है यहाँ पे. Alright, so my learning ये बहुत सारे पढ़ा हुआ है. You can see this is what I've completed. Modern, yeah, this is how I learned HTML and CSS from scratch. मैंने बोला कि बॉस जितना भी जहाँ से भी सीखा मुझे नहीं पता, मैं पूरा आत्मसमर्पण करने वाला हूँ इनको. मैंने बोला कि मैं स्क्रैच से HTML CSS सीखूंगा. And that's the best part about Brad and his learning, man. See, अभी जहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, he spends his time out कुछ जगहों पे where he takes you through different things, and if he's talking about certain features of certain frameworks, वो he takes his time out. देखो CSS basics में he's taken 2 hours 30 minutes सिर्फ अलग से, तो that's fine. But अगर हर चीज़ के लिए बंदा अगर 6 घंटे ले रहा है तो that's unfair, right? वो तो time waste है. So he takes his time out when it's required. देखो HTML बेसिक्स के लिए भी it's taking out 2 hours almost. So ऐसा नहीं है कि he's running through things, ऐसा नहीं है. But again he focuses on project and project based learning. So he's taken, अगर इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने, यहाँ पे होटल वेबसाइट हो गया, फ्लेक्सबॉक्स, पहले ही टॉक्स अबाउट फ्लेक्सबॉक्स. एंड अगर तुमने अभी तक मेरा कोड देखा, आई यूज फ्लेक्सबॉक्स इन सो मेनी प्लेसेस. दैट्स बिकॉज मैंने इनको फॉलो किया एंड मैंने वैसे खुद से प्रोजेक्ट्स बनाए, खुद के और चीज़ें इंप्लीमेंट करी. दैट्स वाई आई एम सो कंफर्टेबल यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड. सो इसलिए इन्होंने फ्लेक्सबॉक्स पे भी प्रोजेक्ट बनवाया. देन क्रिएटेड टॉट लिटिल बिट ऑफ एनिमेशन. मैंने उतना ये यूज़ किया नहीं है, उतना सीखा भी नहीं मैंने ज़्यादा. एंड ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया नहीं, ये पूरा पार्ट मैंने स्किप कर दिया था. आई जस्ट रैन थ्रू ऐसा 2x पे भगा दिया मैंने ये. बट आई लर्न CSS ग्रिड. देन CSS ग्रिड पे वेबसाइट बनाया मैंने. एंड इनके साथ ही लाइक सो आई फॉलोड दैट. एंड ऐसे I followed like went through next HTML and CSS. For Next.js, however, मैंने उनका ही कोर्स फॉलो किया था. And now if you look at this, इसको अगर हम Udemy पे ओपन करेंगे, मतलब instead of the editor, yeah, so if you see here, preview है and you look at these things. ये structure देखो अभी जरा. फंडामेंटल्स पे 1 घंटा, डेटा वेजिंग 45 मिनट्स, स्ट्रैपी बैकएंड. ये तो बैकएंड लाइक ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बैकएंड में क्या होने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट में हम एक अलग बैकएंड यूज़ कर रहे थे उसके लिए. 20 मिनट फंक्शनल. अभी ये पूरा प्रोजेक्ट है. 2 प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हम लोग. एक DJ इवेंट्स करके एक है, एंड एक ब्लॉग बना रहे. आई थिंक इट्स कॉल्ड डेव स्पेस. सो वो 2 प्रोजेक्ट्स के लिए इज टेकन आउट दिस मच. सो इतना पूरा पार्ट इज जस्ट 1 प्रोजेक्ट. ये पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरा फुल स्टैक है. Next.js फंडामेंटल से लेके एक्स्ट्रास एंड डिप्लॉयमेंट तक ये पूरा एक प्रोजेक्ट है. एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग. Next.js के अंदर सारे फीचर्स जो है भाई ने एक प्रोजेक्ट के अंदर कवर कर दिया, विच इज़ अमेजिंग. लाइक वो टाइम पे Next.js के जितने भी फीचर्स थे उन्होंने एक प्रोजेक्ट के अंदर सारे कवर कर लिए. अभी और फीचर्स आ गए हैं, तो आई एम नॉट श्योर उन्होंने अपडेट किया है क्या, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम जब मैंने सीखा, इट कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग देयर इज इन Next.js इन दिस जस्ट 1 प्रोजेक्ट. उसके बाद ही टुक अस लिटिल बिट एक्स्ट्रा. प्रोजेक्ट 2 बनाया हमने, जहाँ पे हमने लेआउट कंपोनेंट्स वगैरह बनाया. दैट्स व्हाई यू विल सी अ लॉट ऑफ माय प्रोजेक्ट. जो लेआउट कंपोनेंट्स वगैरह है, इट्स ऑल फ्रॉम हिज. मैंने खुद से इन्वेंट नहीं किया वो चीज़ों को. इट्स फ्रॉम हिज आइडियाज़. उन्होंने जैसे बनाना शुरू किया था. एंड अभी Next.js का जो फ्रेमवर्क है उसी में लेआउट कंपोनेंट बन के आता है. इफ़ यू लाइक इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ नेक्स्ट, उसका खुद का लेआउट वगैरह कंपोनेंट बना के आता है. सो अगेन दैट गाय इज अमेजिंग. सो उसमें हमने लाइक एक स्टैटिक ब्लॉग बनाया था. पैजिनेशन वगैरह किया हमने वहाँ पे. वी यूज Next.js के फंक्शंस, सॉरी APIs हमने यूज़ किया यहाँ पे भी. सो ऑल इन ऑल 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने
सारे फीचर्स कवर कर लें Next.js के, हाउ टू लाइक इवन डिप्लॉय कैसे करना है वर्सल के अंदर, जो कि बहुत ईजी काम है, 15 मिनट का काम है वो लिटरली। अकाउंट बनाओ, गिटअप सेटअप करो और रेपो को एक्सेस दे दो एंड यू आर ऑलमोस्ट डन। सो बस एनवायरमेंट वेरिएबल्स ऐड करके यू कैन पब्लिश योर ऐप, वेरी इजी। सो दैट इज व्हाई आई टेल पीपल ब्राइट ट्रैवर्सी तुम्हारा एकमात्र भगवान है फॉर वेब डेवलपमेंट। जस्ट फॉलो हिम, क्लोज योर आइज एंड फॉलो हिम एंड यू विल बी फाइन, यू विल बी जस्ट फाइन। बाकी ना I think I can create another div here maybe, like simplify the process. What if I tell you, oops, nahi, अभी भी वही पंगा दे रहा है ना। So I'll tell you what I'm trying to achieve here is, I'll just remove this div right here. What I'm trying to achieve is, मेरे को ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे इतना ही रखना है एंड ये पूरा मेरे को ब्लैंक छोड़ना है। The question is how do I do that? फुल विड्थ दे दिया मैंने इसको, which is fine. But when I just justify center की जगह अगर मैं बिटवीन करके यूज गैप विथ वाई, समझा नहीं? बिकॉज मैंने जस्टिफाई बिटवीन करने के बाद भी इमेज इज स्टिल द सेम। इवन इफ आई यूज लाइक 300 by 400 का इमेज, वो अंदर ही आ रहा था। यूज गैप विथ वाई मुझे समझा नहीं रहा। लेट्स सी, एलिमेंट्स में अगर मैं देखूं this part is 720 cross 60. Why is it 70 pixel? 720. Why is it 720 pixel instead of 1120? Hello? ये स्टाइल अप्लाई हो रहा है ना, फाइल 3XL और छोटा हो जाएगा ना, एज इट शुड। 704 पिक्सल का हो गया ये भी। मैक्स विड्थ ऑफ 6XL। एक्चुअली वेरी स्मॉल फॉर इवन फॉर माई वेबसाइट। अगर तुम देखोगे, इवन माई वेबसाइट इज या दिस इज, तो अगेन इधर तक तो आना चाहिए। दिस इज 1120 पिक्सल्स। इफ यू लुक हियर, नॉट इन कंसोल, सी दिस इज 976, दैट्स स्टिल बिगर देन even that's bigger than the existing one. So I'm not able to figure out ये जो ये पार्ट देख रहे हो, मैक्स विड्थ तो 5XL पे चल रहा है ये। Not sure what I'm missing out on.
ज़रूरत पड़ने नहीं चाहिए. या दिस इज बेटर फाइनली. तो मैंने बस इनहेरिट नहीं किया था फुल विड्थ को. भाई साहब, दिस इज व्हाई यू इट्स सो इम्पोर्टेंट टू हैव लाइक गेट द स्मॉल थिंग्स राइट. ओके, सो बैक टू इंडेक्स. यहाँ पे आई कैन फाइनली से गैप 5 हो गया. बैक टू 600 and 800 maybe. Not 600, 800. Does this help? नहीं यार, उससे भी नहीं हुआ. बैक टू द सेम प्रॉब्लम वी फेसिंग ओरिजिनली. हम लोग को इमेज को लाइक एकदम राइट में खींचना है, तो हाउ डू वी डू दैट? वर्टिकल स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं बिटवीन आइटम्स इन अ फ्लेक्स लेआउट. ब्लैंक स्पेस देने के लिए वर्टिकल स्पेसिंग नहीं बोल रहा हूँ. सो इफ़ आई लाइक ये कंपोनेंट दिख रहा है तो यहाँ पे सो मेरे को ये गैप चाहिए, छोटा सा जो गैप दिख रहा है ना, मेरा कर्सर दिख रहा है तेरे को. आई वांट टू ये मेरे को ये गैप ओपन करना है थोड़ा. सो आई वांट टू लाइक फोकस ऑन दिस पार्ट अ लिटिल हियर. ओके, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. या फिर सिर्फ हमें गैप ही बढ़ाना पड़ेगा. दिस आई कैन डू, ये हो जाएगा, बट माइट नॉट लुक गुड इन द लॉन्ग रन. गैप ऑफ 20. चलो ठीक है, अभी के लिए काम चल जाएगा. अभी के लिए काम चल जाएगा, बट इन द लॉन्ग रन मे बी नॉट. I need someone to edit this image for me, man. It's a really nice picture, but I need someone to edit this. But okay, chalo, abhi ke liye it's good. Also, it's natural, so it's fine. Don't want to do something fancy. This is, by the way, an image from our Sunday chit chat that we're gonna have tomorrow as well at 7:30 sharp. So join in. It's fun. It's a really good conversation that we have. Again, it's nothing fancy, too techie or something like a lot of people expected previously, but जब लाइक ऐसा होता है कि मेरे को लोगों ने ये बोला कि हमको लगता था कि यार पता नहीं क्या टेक्निकल बातें होती होंगी, बट हमने आके देखा तो पता चला एकदम कैजुअल बातें हो रही है. सो इट्स अ वेरी कैजुअल चैट दैट वी हैव जस्ट टू लाइक गेट टू नो ईच अदर कि हमने क्या किया ये हफ्ते में, एंड what we are planning to do in the future and things like that. So it's a very casual chat, so definitely join us and speak out as well. A lot of people बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मेरे को बात करने में डर लगता है. सेम कैटेगरी है, मेरा भी वही प्रॉब्लम था. But now you can see me talk in front of camera, looking into the camera, and that is possible because I took a step forward and मैं लोगों से interact करने लगा. I started talking to people, and उतना करने के बाद ही I'm able to like comfortably speak to people, look into the camera and speak, and ये वैसे ही हो पाया है. So feel free, आ जाओ Discord में आओ, बात करो. And a lot of people who know me first year से जो मेरे को first year engineering से जो मेरे को जानते हैं, they know how tough it was for me to communicate with people in general. So it's tough, I know, but the only way you can fix it is by talking to people. That's the only way to fix your problems. Practice से ही सीखोगे, practice से ही सुधरेगा. Which webcam do you use? Laptop का webcam है, but if I look decent, it's because मेरे पीछे लैपटॉप के पीछे एक रिंग लाइट है विच माई कंपनी प्रोवाइडेड मी. जिस कंपनी में मैं काम करने जाने वाला हूँ, मेरे को उनको ज्वाइन करने को अभी भी 4-5 महीने बाकी है. आई विल बी ज्वाइनिंग देम इन अगस्त, बट फिर भी उनसे सामान आते रहता है, सो दे सेंड मी अ रिंग लाइट जो मैं अभी यूटिलाइज कर रहा हूँ. बट या, सो दैट्स गुड. सो दैट्स वाई द लाइटिंग इज प्रीटी डिसेंट मेरे बिकॉज लिटरली लैपटॉप के कैमरा के पीछे मैंने वो रखा हुआ है. सो दैट्स वाई आई एम एबल टू लाइक सी माई सेल्फ क्लियरली. Create two divs, one for text and one other image. Give that between the two divs. हाँ, essentially वही किया सर्वर ने. मैंने अभी eventually मैंने वही किया. I added like मैंने 2 div बनाए हैं, उसमें gap 20 डाल दिया मैंने. तो that's something that I've done just now.
इवेंचुअली मेरे को वही करना पड़ा. आई डिडंट वांट टू डू दैट बट इट्स फाइन. देखो इमेज का थोड़ा सीन है. ऑलराइट, सो ये कनेक्टेड कैरियर्स का मतलब ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बिकॉज इट्स रिडंडेंट थोड़ा सा. एंड या सो आई नीड अ गुड टैग लाइन. ये मैंने सोचा नहीं यार, पहले सोच के आना चाहिए था लाइव स्ट्रीम से पहले. क्या टैग लाइन रख सकते हैं हम लोग? इसका ज़रूरत नहीं है ना हमको. सो a space for everyone to hop in, learn and upskill themselves in collaboration, if that makes sense. I do not know if it does. I have to like look it up and see what I can do. एक second. So I'm not really impressed with the text, the font. Alright, let's change the font, man. Let's look at fonts. Font family, just a moment. Sorry, voice is not coming. Yeah, I'm on mute for a moment. I was on mute for a moment. Can we talk about some things tomorrow's about? I'll just put my phone here. It looks very odd when I'm looking at it. Yeah. So can we talk about something about the GitHub Campus Expert Program? Yeah, sure, man. So again, मेरे को भी कुछ idea नहीं है. I just applied for it. What I did, like मैंने सिर्फ अपना details डाल दिया है. I talked about the communities that I have. So it asks you what your community is. तो मैंने दो चीज़ें डाली है. एक है कि मेरा खुद का कम्युनिटी जो कि वन बाइट सोशल है, एंड सेकेंडली आई टॉक्ड अबाउट द कम्युनिटी दैट आई हैव इन माई कॉलेज. मैंने बोला है कि माई कॉलेज इज़ माई कम्युनिटी. ऐसा कि जिन जूनियर्स के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, दे आर माई पीपल एंड दोज आर द पीपल दैट आई इंटरेक्ट विद एंड आई काइंड ऑफ इन अ वे इन्फ्लुएंस. सो दैट इज़ माई ऑडियंस. सो अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, दोज आर माई ऑडियंस. मैं कुछ भी करता हूँ, मैं कोई भी नया चीज़ कर रहा हूँ, मेरी इंस्टा स्टोरी पे लिंक जाता है, मैं अपने जूनियर्स को ही जाके स्पैम करता हूँ कि भाई ये देखो, ये फॉलो करो, ये सब्सक्राइब करो. सो दैट दोज आर द टू थिंग्स दैट आई मेंशन व्हेन दे आस्क यू लाइक कि कम्युनिटी के बारे में क्या बताओगे. सो दोज आर द टू थिंग्स दैट आई डिड. एंड मेरे कॉलेज में तो कोई कम्युनिटी नहीं है. क्रिएट वन. इट्स दैट सिंपल. क्रिएट वन बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट. दैट्स व्हाट आई डिड एज वेल. कि हमारे कॉलेज में कोई ऐसा कल्चर था नहीं कोडिंग का या कोई और चीज़ का, क्योंकि एक तो ऑनलाइन चल रहा था एंड देयर वाज वेल barely any interaction between us and the seniors, and we had to someone had to step in and say कि बॉस interactions को चालू करना पड़ेगा and we'll have to like tell people to interact with each other and साथ में काम करो. उनके लिए awareness spread करना पड़ेगा कि बॉस ऐसा ऐसा रहता है. So like start learning now. अभी से सीखना चालू करो. Do not wait until placements come and उसके बाद तुम सीखना चालू करो. Don't do that. Instead सीखना चालू कर दो धीरे धीरे. सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, जैसे जैसे चल रहा है. एज एंड व्हेन यू प्रोग्रेस थ्रू योर करिकुलम, उसके साथ साथ में ही ये सारी चीज़ें करते जाओ. लीड कोड करो, डेवलपमेंट करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ. सो जैसे जैसे वो इंटरेक्शन हमारा बढ़ना चालू हुआ, दीज आर द पीपल जो तुमको फोटो में लोग दिख रहे हैं, दीज आर ऑल माई फ्रेंड्स एक्सेप्ट मेरे ऊपर जिस बंदे का फोटो है, दैट गाइज माई क्लासमेट निनाद. उसके ही इज़ अ कम्युनिटी मैनेजर. उसके अलावा बाकी सारे लोग जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दोज आर ऑल माई जूनियर्स. तो दे आर सो उनके साथ ही मेरा स्टार्टिंग में इंटरेक्शन हुआ. आई स्टार्टेड टॉकिंग विद दिस पीपल, टेलिंग देम कि अच्छा ऐसे ऐसा करना होता है, अभी ये टाइम पे तुम ये सीखो, ये तुम्हारे लिए आइडियल है. एंड दैट्स वाई कैन यू गिव मी सम मेंटरशिप? श्योर मैन, डेफिनेटली. कुछ भी रहेगा जस्ट लेट मी नो. अगेन
there's no formality तुमको कोई फॉर्म भरना है ये करना है, एटलीस्ट नॉट एज ऑफ नाउ. You just have to like drop me a message and उसके बाद we can take it from there. So that's not a problem. Alright, let's get back to development. वैसे ही ये प्रॉब्लम लाइव स्ट्रीम करने का प्रॉब्लम यही है कि मैं बहुत बकबक करता हूँ एंड बहुत टाइम पास हो जाता है. 2 घंटे हो गए भाई एंड द ओनली थिंग वी हैव डन इज दिस. और मैं सोचा था भाई स्पीड रन कर दूंगा, मैं बहुत कुछ करने वाला था, मैं कुछ नहीं हुआ. Alright, so yeah, space for everyone to hop in, upskill and learn and upskill in collaboration. I'm not really convinced with that description, but it's fine. Add another class name. This is going to be, let's meet you tomorrow, bro. Bye bye Nishit, take care. Okay, text, it's fine. यहाँ पे क्या डालूं? Yeah, something like that. I'll keep this as is. Byte 2 हो गया इसको भी. Learning resources, mentorship, networking, regular interactions, activities. That's something similar. How about MY4? Sounds good. And I think 3XL is fine. थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया. Maybe 4XL is too much. सेवन एक्सएल करूँ क्या? I want to see 6SL में क्या डिफरेंस आता है. Let's see. Okay. Yeah. Okay. Quite a bit of difference. 7XL कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा. See you tomorrow, Nishit. Yeah, 7XL seems good. What else can we do? And then I think I can make this 4XL. I think that makes a lot more sense now. Yeah, this looks better now because image के comparison में मैं text को देख रहा था and I wanted to see what it looks like. Text को मैं gray 100 कर देता हूँ तो it looks slightly like not pure white. Gray 200 maybe. Yeah, that's actually nice. ये ठीक है, ये अच्छा लग रहा है. Okay, so learning resources, mentorship, networking and regular interactions and activities sound solid. अभी अपने को क्या करना है? We have to add a button to join our community, right? That has our Discord server link. So let's create a button. Again, Tailwind makes a lot of things easier. So this was one container. BC container के नीचे I have to create another div as a class name of block. Display block हो जाएगा. Then I have to add a small shadow and px3 py4 px4 py3 and that's padding on the vertical and horizontal. And we're gonna have bg. What color goes with this one? इसके साथ color कौन सा जाएगा? अच्छा, like because it was a purple thing, red अच्छा लगा. Something dark blue maybe. 700 or 800. Let's see how this ends up. Rounded MD. और क्या हो सकता है? MY4 width full. Yeah, width 3x4 कर लेते हैं. And we're gonna have lastly the button itself. So it's going to be a link ahref. It's going to take us to the Discord link. उसके लिए I'll add the link later. And I'm just gonna say join
us on Discord. Let's see what it looks like. Okay, so end result pretty decent. Although I'm not gonna say. Actually, we don't need a div here. I can actually like just use a class name. It's an extra div. You don't have to add unnecessary divs. That's something that you learn going for. Like जैसे जैसे कोड करते जाओ, you realize कि बहुत बेकार में हम divs ऐड कर देते हैं. ऐसे उसे होता ही है कि अभी नाउ आई बिकॉज ना यहाँ AHREF उसके अंदर ही पैडिंग, तो कॉर्नर्स पे भी क्लिक करूँगा तो लिंक सेम लिंक पे जाएगा. लेट्स से my of 8. That's a significant difference from the top. अभी कंपेयर करते हैं. So I'm not sure if this color goes with this thing, man. Also it's a gradient, so let's look at colors again. Customizing colors. Let's see इसके साथ क्या अच्छा जाएगा. ये क्या है? ब्लू. ब्लू अच्छा होगा या इंडिगो अच्छा होगा? Which is better? What do you guys think? Okay, so let's go with blue 800. No, let's go with blue 900 maybe. Blue 900. Looks pretty much the same, man. Alright, let's ask ChatGPT which color would go well for a button with the website background, that what it is. So layout mein our background is Zinc 900. So let's surrender to ChatGPT and ask him what he thinks. So I already asked, I created a prompt before, and I'm just gonna continue here. Say for a website that has a background, and specify that it's a Tailwind background, which button background color would be ideal? Let's see what he says. I'm glad it's out. I like how the limit wala error nahi hai. Although it's taking time. It's very slow, but I can like wait for it. Dark shade of gray makes sense. It's taking a lot of time, but it's fine. Teal 500. Interesting color choice. Whoop. Hi, easy bro. So maybe it's still typing, that's why. Let's try BG Teal 500. Oh, not here, bhai. Not here. Interesting. What do you guys think? Looks decent. ओवरऑल डिजाइन, ये तो वही बोलने वाला है. Let's see what he says. Makes sense. If you prefer lighter color, you can consider using lighter shade of blue or purple. For example, BDG to 500. What does PG Indigo 500 look like? We'll find out. Hey, this looks good. Whoa, this looks good.
PG Indigo 500, solid. Yo, ChatGPT is awesome. ChatGPT, mast aadmi hai tu. That was awesome, man. That's a lovely suggestion. Font semi bold, so people can actually like see it as a link. Join us on Discord, yay! And all right. What I can do now? Okay, don't need this now. Right, let's look at the mock-up again, see what we have. Can work for maybe half an hour. Okay, so now that no one's chatting, I can like no one's on stream, no one's watching, so I can like really run through. Hold on. Alrighty, so let's look at some other things that we can change. So before we end the stream, let's cover this component where we talk about the specifics of our website, and then I think we can wrap up for today. One thing I wanted to change here a little bit is this margin. P8. Okay, that's the no wait. MY20. That's the problem there. Fixed. MT20 and going to be MB of maybe just 10, not too much. Yeah, that's much better. So again, you have a title which is a little too big maybe. I'm not too sure about 4XL, man. I'm a little confused in which is better. I think this is fine. You have your join us link on Discord as well that I can update actually now that I'm free. You go to our Twitter. There's a link already there that I can just copy. And just put it here. Where's the not there you go. So just put it here. I'm gonna make it target is as underscore blank because it's going to be on a new tab, and what I'm also going to do is ref is equal to no refer. I think this is for security reasons. That's what they suggest. So when you run npm run lint, it's going to suggest you to like do that. So it's a security thing. I haven't gone too deep into it. It just told me to do this. I do it, and the build runs fine. So by experience, I got this error, so I thought I should fix it that way. I also let's see, Indigo 200. How does this look on the border? It looks like Discord ka website. So it's nice. It's nice. Maybe 300. That looks good. Solid. Alright, so I want to change the color of the thing a little bit. Let's look at gradients maybe. Linear gradient. That's why this documentation is so good, man. To right from cyan to blue. Or maybe
This one, the third one looks better, right? Let's try that. Let's try that. Oh no, 900 is too dark. Indigo 300. Too light. Maybe let's try 4 to 6. That looks better, I think. I'm not sure. That looks, yeah, something similar to what we wanted to achieve with this. So yeah, the first part of the website is pretty much done. Again, looks decent to me. What I'm going to do next is just create this part of the website as well. This is simple. It's a grid of 2 by 2. It's going to have some sort of message. This is going to be like this is going to take one little part of the website, one little part of the left, and the majority is going to be on here. Or should I put our mission here first? What should I do? Okay, I'll do this first. This looks more achievable, but then it's relatively like the same UI over and over again, so that's why I'm a little confused. What should I do? I'm a little confused. Alright, let's try this maybe. I'll just go for it and see how it looks like, what it looks like. So it's best to categorize your things into proper components. Let's call it hero.jsx, and this guy returns, we're using not header, we're using image, and we're just using image, right? We're not using anything else, so just put image here. So basically we're refactoring this component into just one, refactoring this into one component. So I'm gonna say import hero from, it should be as it is. So perfect, that's like perfect refactoring. And so now you can see the index like looks so good now. Just header hero, so like just like that हम लोग एक के नीचे एक component add करते जाते हैं, तो it looks neat that way. What if I remove this class name? Does it change anything? It should not, because ऊपर ही हमने डाला हुआ है वो. Yeah, it should not change anything ना. तो this div has essentially no point. I'm not sure if it does. It doesn't. Yeah, it doesn't have a point. So let's remove that again. So this is why it's good to refactor. It's good to keep refactoring things. So you realize the part of code that's actually useless, and you can actually take that out. Let's create another div. This time around, it's going to be flexbox again, I think. So two main differentiators. There's one text on the left and 4 cards on the right. Okay, so great. Man, खाने की खुशबू आ रही है, मुझे भूख लग रही है. Let's create a flex.
This is going to be item center, justify center as well, and it's going to be gap 4, I think, gap 10. So in one container we're going to have a lot from the similar to the hero one, except the link. So text is almost identical, right? So just I'm gonna say flex of 0.3. Put another flex container. This time I'm gonna say flex 0.7. You can see एक part को like substantially like एक part को ज़्यादा जगह दिया हमने. So यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? We're going to create a 2x2 container. Like I think we can do grid, but flex से भी काम हो जाएगा अपना. इसमें लेक्चर ऐप रख सकते हैं हम लोग. And we can have इसमें क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, वो सब तो सेम ही रहने वाला है. Okay, let's create one card. It's going to be card that says text का साइज सेम रहने वाला है. Background of blue indigo 400 and इन्होंने क्या किया है? they have black text, so they've chosen relatively light backgrounds. So I'm going to choose indigo 300 and text मैं black ही रहने दूंगा. Rounded MD, B4. Let's see how this looks actually. पहले चेक करते कैसे दिखता है. Okay, black is not the way to go, so it's PG gray. Wait, not PG, sorry. Text gray 400. Does that look decent enough? नहीं. Why do I keep minimizing this? नहीं यार, बहुत लाइट हो जाएगा. That's better. कार्ड और लाइट हो सकता है. Oh, the main thing that I missed. It's BG white. Color change हो रहा है. What? अच्छा, okay, right. हमको यहाँ पे चेंज करना हुआ है. Cause we forgot. हमारा डिफॉल्ट बैकग्राउंड ये है.
but it doesn't have to be default. So we have to mention this in the header, save that, and mention this in the hero as well, save that. ओके दिस इज इंटरेस्टिंग. हम लोग एक प्रॉब्लम में आ गए क्योंकि हम लोग लाइक इसके आर पार जो भी है उसको वाइट ही रखना पड़ेगा, बट दैट कैन नॉट रियली हैपन. हाउ डू वी फिक्स दिस? दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू बी इन. मेरे को ये पूरा एरिया ब्लैक लाइक ग्रे चाहिए, बट दैट मीन्स आई ऑल्सो हैव टू टैप इन टू अदर थिंग्स. लाइक मार्जिन वगैरह डालूंगा वो पूरा चेंज हो जाएगा, बट मेरे को ये साइड भी लाइक वाइट ही चाहिए इफ आई कीप इट दैट वे. ठीक है, आई थिंक प्रोसेस सही है, बस थोड़ा द आइडिया इज राइट, जस्ट दैट आई एम गोइंग प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करना होगा हमको. सो लेआउट में जाते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. डार्क मोड में ही रखना. नहीं बात तो सही है तेरी, बट मेरे को ये पार्ट लाइट चाहिए. सो लाइक जैसे वो कॉन्ट्रास्ट दिखना चाहिए ना, जैसे वो मॉकअप में भी वैसे ही दिख रहा है ना. लुक्स लिटिल डिफरेंट. कहाँ गया मॉकअप? यहाँ दिख रहा है ना. या पूरा डार्क मोड में रखूँगा तो आई डोंट माइंड दैट, बट एक्चुअली पूरा डार्क ही रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. इन विच केस देन आई डोंट हैव टू मेंशन दीज थिंग्स हियर. मैं लेआउट में यहीं पे डाल दूंगा. आई मीन नॉट अ प्रॉब्लम. ब्लैक का लाइटर शेड में भी दैट्स नॉट एन इशू अगेन, बट वही है कि मेरे को इम्पैक्ट ना पूरा होना चाहिए. दिस इज जस्ट इफेक्टिंग द डिव स्पेस. अगर कर रहा हूँ तो इट हैज टू बी एवरीवेयर ना. दैट्स द थिंग दैट आई कैन डीबग लेटर, उसका प्रॉब्लम नहीं है. बट अभी के लिए क्या कर सकते हैं? ओके लेट्स कीप इट प्लेन ब्लैक, मैन इट्स फाइन. ब्लैक बैकग्राउंड पे ही खेलते हैं. इट जस्ट मीन्स दैट कंपोनेंट का कलर हमको चेंज करना होगा थोड़ा. जो कंपोनेंट का बैकग्राउंड है ना उसको हमें चेंज करना होगा बस. वी कैन नॉट यूज दिस कलर इन ब्लैक बैकग्राउंड. Indigo 600 maybe, and then text gray 100. Indigo 700 maybe. That's fine, that looks better. Max width is going to be 200 pixel. बटन में डिस्कॉर्ड आइकॉन डालता हूँ. ओके सो आई हैव टू इंपोर्ट आइकॉन्स. हाँ वो करूँगा, वो तो करना ही है भाई. यहाँ पे भी शैडो एमडी. या फिर और आई कैन डू इज आई कैन डू उल्टा. आई कैन लिटरली गो रिवर्स. एंड आई कैन लाइक गो टेक्स्ट ग्रे 900. Not sure how that's gonna look. No, it looks yucky. Looks bad. I think this is fine for now. इसका कुछ कलर पैटर्न चेंज इसका कुछ देखना पड़ेगा यार. I have to see some other options too. अभी के लिए let's work with this and let's create more of these. 4. And as I expected, they are stuck together. No man, they have to be
two के pairs में रखना one, so it has to be div one like this and the other one like this. यहाँ भी सेम my6 हो जाएगा तो that doesn't affect it. This is interesting. अगर मैं div अगर मेरे को flex wrap का जो पार्ट है अगर मुझे वो चेंज करना है तो how do I add a gap here? Is it going to be stuck this way? Gap. This gap y doesn't do anything as well. Does column gap help? It does not. Interesting. So column gap P does not contribute here. What can we do here, boys? यहाँ पे क्या कर सकते हैं? So we have a flex wrap situation here, kind of, where we have two divs. It's clearly going to be one below the other in like terms of two. Padding से help होगी. पैडिंग से काम हो सकता है शायद. आई हैव अ फीलिंग. पैडिंग से भी काम नहीं हुआ. व्हाट कैन हेल्प मी एट दिस स्टेज? At this stage, if I like 2h full, that's not what I want. Although I'm stuck in a CSS problem here, but it's fine. Okay, I'll try to fix this and then I'll probably like call it a day for the stream. I love how my first live stream has gone on to 2.5 hours already, so it's nice. But something that I've got to, iska kuch to karna padega. I can't stick with this. Let's see CSS grid. Let's explore grid. We don't have to go by flex. We can try grid. So I'll copy this div here. Copy this here and I'll take this out. Whoops, wrong. Okay, so I'm just gonna hide the file explorer. So थोड़ा और real estate मिल जाएगा कोड करने के लिए. Alright, so I have. Let's try grid.
gonna search grid template rows, some kind of this kind of implementation maybe. Grid template column से भी काम हो सकता है क्या? ग्रिड के लिए सेंटरिंग प्रॉपर्टीज भी अलग होता है. आई एम नॉट टू श्योर दैट्स व्हाई. That's pretty much it. That's perfect. That does the job for me. Except I'm not too sure. ये gap इतना बड़ा भी नहीं रहना चाहिए. What if I remove the gap? Look. नहीं. Gap 10 ठीक है. But I'll do gap 6. It's fine. Let's look into it a little bit. It's going to be content center. Yep, that's the one. I think that should make the difference. Content center justify might not change. But if I look at the grid here, hey Ayuni, welcome to the stream. Hello, glad to see you here. Alright, if I look at the grid here, so this is what I'm doing. I'm developing a website for my community, and this is where I am so far. Like the hero section is ready. I'm just looking into add a section where I can add the different features of the community. I can't see timestamp, so I don't really know when you when you said hi. Hold on. Toggle timestamps. Yeah, just a minute ago, right? I thought I missed an old chat. Alright, so I'm interested in this one. So if I look at this, okay, so this is going to, this is assuming a full width, which makes sense. But however, if I don't have to, if I just take this out, but if I take this out, it's still going to take, oh, this is better. This makes more sense. And yeah, this looks better. So now I can just have, instead of
Justify center, I can do justify between. Yeah, that's about it. I think I'm doing it right for now, and maybe a little bit more margin and it looks better from there, but yeah, I think it's fine for now. Yeah, it looks better. Actually, now I can add the flex parameters as well. So this can be flex of 0.3. So flex parameters as in the fraction of space it individual container gets. So this is going to be 0.7 because 0.3 was given to the top one. Oh, sorry, this is 0.7, not 0.3. Okay, but yeah, if it takes 0.7, it's going to share that entirely to the grid. And eventually there's no real point of having these things then. So yeah. But then as in when, then if I increase the if I increase the width, okay, 400's maybe a little too much. 300 is fine. How's it going, Ayuni? How's the Python development going? Have you solved your problem, like your yesterday's problem, and or are you like still working on it? Are you trying something new? What's going on? Let me know. And yeah, about what I said in terms of, okay, now that you're here, I can talk about it. I told you about wireframe, not really wireframing, but like control flow graphs, right? So it's something like this. If I tell you, yeah, today's problem too, very happy, awesome. So control flow diagram, right? So this is what I was explaining. So this is what I expect from you. This is what it looks like. It's a high level for this is one of my projects that is on Hashnode. It's basically an application that in a way it's basically a cloud application where it like uploads we can upload a resume to an endpoint. It extracts a text from the resume, it compiles it into a particular format, uploads it into a storage bucket, and then sends an email. So this is a structure of that program. So it's like step by step you can look into different things, and you can say, okay, this is how it goes in general. So so looking at a problem, so the larger picture is that, so the larger picture here is that I upload a CV to an endpoint somewhere. I want to give my CV somewhere. It takes that CV or resume file, extracts the text out of it, and it has to and based on that text it has to extract the email and name, and it has to send me an email. So it's like a classic ATS for company recruitment, where they grab their applicants' emails and they say thank you for applying. So it's simple as that. It's that simple. So maybe they want to integrate this email feature with their ATS, they can do this. So it's that simple. So just a layout of what it looks like. This is the one. So it's basically where you upload a CV, extract text out of it, compile it to JSON. That's a format, and then upload that JSON string to the bucket. And then when you upload it to a bucket, a function is triggered, and that triggers the email as well. Building this with the bubbles and all of that will slow down my train of thoughts. Can I use mind map instead? I'm not too sure. So it doesn't have to be this formatted or anything like that. You can just like draw 4 boxes and just go one by one. It's that simple. You don't have to like showcase in different colors or anything. It just can be 4 boxes, one after the other. One goes to the next, then to the next, and then to the next. Why is this important? Is because you might come across conditions. I'll show you another mind map or another data flow diagram that I have. Control flow rather, not data flow. So this is one of the application. This is one of my APIs that I'm using in an internship, and this is the diagram that I use to explain it to people. So here's where it gets interesting, because that's just a straight diagram, right? 1, 2, 3, 4. This is interesting. This is where conditions come in. I'm just gonna put it like on my browser fully.
So here's the thing, this is a larger one, because now there are like comparisons there are conditions to be checked. So every row comes in, I have to see whether it's a valid or invalid. If it's not valid, it has to go to a separate file, or else if it's valid, I perform some operations on it. So that is why the different types of colors and all of that you see, it's because you want to differentiate, and you want to like if you want to explain it to someone else, it has to be easy to look at. So when you look at it, you know what the program is doing. So that is why I'm not sure if you're familiar with any other programming language rather, but when I started learning, the first thing that we were told, instead of like writing code, we were taught how to write algorithms. Algorithms are basically pseudo code, like step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, and they also told us to draw flowchart. So we learned assembly as well in our junior college. We learned assembly where we coded on Intel 8085 processors, microprocessors rather. We had to like input on different we had to increment some counters. We had to like set values to accumulators, and it's very interesting when you look into the core of it. So that is where you really like build your logic, and this is all to understand your like to improve your understanding of things. So when I give you a problem that you have to do algorithm first in flowchart, you say I suggest you could see this was the process that before coding, do algo first and flowchart. You can do either of them. In my experience, I did both, but I don't think both of them is necessary. You can just do whatever you're comfortable with, but you have to do at least one of the two. So I prefer flowchart. It's better than anything else, to be in my opinion. Just draw a diagram, just like on a piece of paper. It can be very rough. You don't have to like color it or anything. Just write it on a piece of paper. Step 1, this is what I'm doing first. Then step 2, then I'm going if condition fails, like yesterday the problem you were solving, I think it was a math professor thing where you're like inputting you're giving out 2 random numbers, you're checking if you gave the right sum to it. I think that was the problem. So look at the structure of this problem now. You're looking, okay, step 1, you take 2 numbers as input. Sorry, you generate 2 random numbers, then you compute the sum in the backend. Then you take the result as your input, as what the student thinks is the answer. Now, here's where a condition comes in. You check that, okay, if the answer is right, you say, yeah, well done. But if the answer is not right, you have to like print that same problem again or give them a different problem. So this is where you can write, like you can draw an entire diagram, and you can visualize which are the different flows through which my program can go. And here is where you can also tackle that exception where you're getting if the user inputs a string instead of a number. That's the interesting one. So when you draw this on a piece of paper, you get to understand what are the different flows through which your program can go. And gradually, when you are like more experienced, maybe if you do this consistently, in a couple of months from now, when you look at a problem, you'll already visualize this diagram in your mind. You do not have to actually draw it on a piece of paper. When it's a simple problem, you'll start visualizing this in your mind, and your brain will automatically go towards edge cases and those tricky ones where you start to assume that the user is going to input something dumb, and you can already tackle it, and you're ready to tackle it. So yeah, that's the whole idea of drawing a flowchart. All right, so that was my little suggestion. That's why I said when you were struggling and when you didn't know where you were going and what you wanted to do next, I thought that maybe the problem in general is not clear for you. That's why I suggested, okay, maybe write this on a piece of paper and then proceed forward. So whenever you come across a new problem, write it down step by step, see what you're going to do to tackle it, then come back to code and then go step by step, follow the process entirely. So yeah, you're welcome. So before I call up the stream, just a couple of things to do now. Before, like, I can probably continue this in the next stream, or I'll just sit through this at night and finish this off. Is this not going to take too long? Increase the margin a little bit. I'm just going to say empty 10 maybe. Give it some extra margin. Okay, that didn't do anything. Hello. Oh wait, the wrong margin. But wait, this should actually have, I think hero can have MY20 instead of MT20.
Okay. You have your resources and everything there. I think that's 2 sections of our website done. What we can do next is come back tomorrow, maybe. Not tomorrow. I think we have a chit chat session tomorrow evening. So what we can do is come back to the next stream and look at the other sections. I think not a lot of work is done remaining. I can just probably do this at night. It's fine. And we can maybe come back and look at the end result and see how it looks. Alright then. And until we meet next time, take care and have a good one. Cheers. And more importantly, thank you for watching for so long. It's been a almost 3-hour stream, and yeah, thank you for watching. Bye bye. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control